It's out of my hand, but I'm still in control. It's out of my hands. You can never take away the power of my soul. It's out of my hands, but I'm still in control. It's out of my hands. You can never take away the power of my soul. Good morning, good morning, good morning. Feviquick UDM Breeze. Welcome to the stream. क्या कर दिया यार तुम लोगों ने, ये क्या मजाक कर दिया? क्या हो गया मिस्टर हवा हवाई? What is happening? What happened to you, my friend? Please say. अभी solution निकालते हैं, क्या हुआ? सौम्य, welcome to the stream. Good, good यार, ठीक है. Deep truths there may be, but none is deeper than this. Those lost to us do not return, nor the years turn back. Rather, it is that we carry a piece of those lost to us within ourselves or on our back. शाबाश, बहुत बढ़िया. Thus ghosts are real and we never escape them. मैं भूतों में विश्वास नहीं रखता. I don't believe in ghosts, but पता है मैं किस चीज़ में विश्वास रखता हूँ? I believe in your ability to solve this. इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ मैं. तो आइए शुरू करते हैं. पहला वर्ड हमेशा हाउस. इनको पता चल गया आजकल ये साले क्या करने लगे हैं, कम से कम वॉवल्स के साथ वर्ड देते हैं, कम से कम वॉवल्स के साथ. ट्रेड, ओके. ट्रेड तो नहीं है, लेकिन वर्ड अपनी जगह पर सही है. ब्रेव हो सकता है, लेकिन ए नहीं आएगा उसके अंदर. प्राइस, दैट्स गुड. क्या बात है, मैंने सही बोला था. आई बिलीव इन योर एबिलिटी टू सॉल्व दिस वर्डल. नॉट मॉड, वेलकम माय मिसिंग व्यूअर. वेलकम वेलकम. स्पेलिंग बी, ओके. तो आज हमारा जो मेन लेटर है वो है डी, और उसके साथ आसपास ये सारे लेटर्स हैं. ठीक है, तो चलिए बनाते हैं. अरे आप तो सूख गए, मैं सूख गया. अच्छा. भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे. एग्जैक्टली, आई डोंट बिलीव इन घोस्ट्स. ओके, तो ये हो गया टोड. ठीक है, और डोनेशन. क्या बात है यार, तुम यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी गुड. एडमेंट, क्या बात है भाई, क्या बात है. मैडमैन, अबे तुम्हें तो यार वहां जाना चाहिए, हैं जी. डोमिनियन,
अरे भाई बाकी लोग को शर्म कर लो, सब यही बताएगा, तुम भी कुछ देख लो। मैं तो 4-4 लेटर के वर्ड ढूंढता हूँ भाई, तो सब कुछ एडिशन। अरे तुम्हें वो है क्या, वो वाली बीमारी है क्या मिस्टर हवा भाई? वो होता है ना, क्या कहते हैं, ब्यूटीफुल माइंड है। आर यू ऑन द स्पेक्ट्रम? है कि तुमने वर्ड का ऐसे ओवरव्यू देखा और तुम्हें सब पता चल गया कि इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। क्या बात है, क्या बात है। दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलो गेम स्टार्ट करते हैं। आज शियान्यून की स्टोरी क्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने बात रियलाइज़ कर ली कि जब भी कोई नई क्वेस्ट आए या नया कुछ भी आए उसको हाथ कर लेना चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं, इंटिमिडेशन हो गया, अब वो ख़त्म हो गया। कि जो लोग हैं वो बेसिकली बिना स्पॉइलर के आपको जीने नहीं देंगे। बेसिकली जितने भी दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो स्टोरी क्वेस्ट करते हैं और फिर उसका वॉट डालते हैं बाद में जाके, उसकी वीडियो अपलोड करते हैं, भाई साहब उसी में क्या कहते हैं, थंबनेल के अंदर ही दिखा देते हैं कि स्टोरी उसमें क्या होने वाला है। मतलब यार ये कैसा स्पॉइलर है। लैंटर्न राइट हुआ पहले? नहीं, पहले मैं शियान्यून की स्टोरी क्वेस्ट करने वाला हूँ, उसका लैंटर्न राइट करूंगा। शियान्यून स्टोरी क्वेस्ट फर्स्ट। डॉक्टर स्टोन जरूर देखना, बहुत ज़्यादा फ्रेश कॉन्सेप्ट है। नो मैजिक, प्योर साइंस एंड साइंस फिक्शन। ओके, डॉक्टर स्टोन, कूल। मैं ऐड कर लेता हूँ उसको। गाइज बाय द वे, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार अनाउंस कर दूं कि जैसे कि नीचे आपको बैनर पे नज़र आ रहा होगा कि वेल्किन मून 420 रुपीज़ के अंदर आपको मिल सकता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल्स मैंने सारी दी हुई है कैसे मिलेगा। और आज शिवाजी महाराज की जयंती पे स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ फॉलो द प्रोसेस इन द डिस्क्रिप्शन जो मैंने मेंशन किया है। ठीक है, और वहाँ पे कोड आपने यूज़ करना है आर्कॉन। तो 420 के बाद भी एडिशनल आपको आज डिस्काउंट मिलेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर किसी को वेल्किन लेने हो तो टुडे इज़ योर लकी डे। Let's start Xianyun story quest. I want to eat your pancreas देखा है, made me realize that even optimism can make a man cry. ये मैंने इसका नाम सुना है, मैंने देखा नहीं यार ये। यार बहुत सारी चीज़ों का ना ऐसे एनिमेज का नाम सुना हुआ है बट ना देख नहीं पाते, क्या करें, होता है, इट हैपेंस। हंटर मास्क भाई स्टार्ट करो, बस स्टार्ट कर दिया। सुजीन वेलकम टू द स्ट्रीम, क्या हाल चाल? ओके, ये वाला अपना क्लेम करते हैं। तो मतलब मैं इतना गेम नहीं खोला, मैं ये भी जो इसका वो नहीं आया था, मैं उसको वो करना भूल गया, क्लेम करना भूल गया। जो 7 दिन का जो 10 पुल्स थे, मैं 10 पुल्स क्लेम करना भूल गया, मेरे 4 पुल्स रह गए। बताओ, ये सब मैंने कुछ नहीं किया हुआ। आई हैव नॉट डन एनी ऑफ दीज, बट मैं सीधा पहले स्टोरी क्वेस्ट में जाके जंप करूंगा, बिकॉज दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। वर्ल्ड क्वेस्ट बाद में, स्टोरी क्वेस्ट। द ओरियोले बास्क इन स्प्रिंग, द हेवंस प्रेजेंट ऑस्पिसिस। ये कैसा नाम है? टीटीजी गेम्स, क्या हाल चाल? अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओजीज, द ओजीज आर हियर हैं जी, द ओजीज आर हियर। कूल कूल कूल। लेट्स स्टार्ट द शियान्यून स्टोरी क्वेस्ट। शियान्यून की स्टोरी क्वेस्ट जो है यहाँ क्यों स्टार्ट हो रही है? फॉन्टेन के अंदर। अरे तुम बंद नहीं हुए। वाई इज शियान्यून स्टोरी क्वेस्ट स्टार्टिंग इन फॉन्टेन? अच्छा ये करना है, सॉरी, नेविगेट। हाँ यहाँ होनी चाहिए ना। क्लाउड रिटेनर स्टोरी क्वेस्ट, यस, वो स्टार्ट कर रहे हैं हम अब। कमीशन है वो तो समझ गया, मेरे को कमीशन है, मैंने गलती से उस पर क्लिक कर दिया था नेविगेट करने के लिए। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। कहाँ जाना है? नीचे। शियान्यून की स्टोरी क्वेस्ट में कचिंग काय खड़ी है? टीटीजी गेम्स, क्या बात है। थैंक यू फॉर द 20 ओजीज आर हियर विद द डोनेशन। क्या बात है भाई, के बैंक बुंक लूट लिया क्या? है भाई टीटीजी गेम्स, लूटेड अ बैंक और व्हाट? थैंक यू फॉर द 20 मैन, अप्रिशिएट इट। Nice to see you again, traveler in Paimon. Oh, we're not interrupting anything, are we? अच्छा, प्ले रिवॉर्ड्स, ओहो चलो जो भी है। Not at all. I wasn't
in the middle of an interview or anything. I was just asking Miss Kuching about purchasing a kite. मैं शायद रीनेम करके खान सगारा रख दूंगा नेम। तुम तो नाम बदलते रहते हो यार। तुम्हारा नाम कभी हल्दीराम होता है, कभी ये होता है, कभी कुछ होता है। अ मैन विद मेनी नेम्स। अरे स्टोरी क्वेस्ट मेन्यू में जाके नेविगेट करो, ये नहीं है। ये वो लिंटरनेट स्टार्ट हो गया क्या? A kite? Are you buying some regional specialties to bring back to Fontaine? लास्ट टाइम 40 करने वाला था, पर फिर 39.8 रुपीज़ थे मेरे पास उस टाइम, तो 2 बार 20 कर दिया। ओके। Well, yes. And It seems you haven't Thank you, heard Joseph. yet. The theme of this year's Thank you, lantern Joseph. night is kites. बाप रे, शियान्युन की स्टोरी को स्टार्ट करने वाला था, लिंटरनेट स्टार्ट हो गया। बहुत बढ़िया, Oh, so that's why Paimon has seen so many floating in the sky. बहुत बढ़िया। Alleyways Harbor is always changing, so it is only fitting that Lantern Rite should change in turn. वहाँ लिखा हुआ तो स्टोरी क्वेस्ट, मुझे लगा वही स्टोरी क्वेस्ट The होगी। Chishing believes it would benefit Liyue to build on our own cultural foundation by embracing the technologies of other nations. After all, it is said that the stones of another mountain may serve to better polish one's own jade. yeah. चलो कोई नहीं, remember ये my ओवर होने दो, फिर business स्टार्ट करते हैं। meeting with Tianquan Ningguang the last time I was in Liyue Harbor? That's what it was about. But all I really did was use my network to introduce Lady Ningguang to some interesting people. I'm not sure that quite counts as fostering cooperation. हाँ हाँ भाई, समझ गया, लिंटन राइट है, समझ गया। और इतने दिन वेल्किन क्लेम नहीं किया, माइकल के पैसे गए। यार मैंने ऑलमोस्ट 8 या 9 दिन का वेल्किन क्लेम नहीं किया। In the end, we Imagine. decided to combine Liyue's traditional इतना art ज़्यादा of busy kite था। making with Fontaine's mechanical vertical lifting device. Mechanical lifting device? अभी मेरे पास 3 महीने का वेल्किन है, बाय द वे। Impressive. But don't kites just use the wind to fly? Why would you need to add something mechanical? Well, you've actually just answered your own question, Paimon. How high and far a kite can fly depends as much on the weather conditions as on the skill of the person holding the string. मैं तो वो लॉगिन वाले का लास्ट का 5 पुल वाले का क्लेम करना भूल गया। मैंने भी नहीं किया। लास्ट में जो 5 थे पुल्स, मैंने भी क्लेम नहीं किए। But as soon as there's no wind, you can only flail about helplessly like a sweet flower medaka out of water. Experience doesn't matter at that point. Exactly. Liyue is now a nation ruled by humans after all. It's about time we had the power to make a kite fly, don't you think? Plus, the easier we can make it to enjoy, the more people will want to participate. Right? I also thought it was a novel idea. Plus, it shouldn't cost much to do. भाई यार, ये तो इंट्रो वाला जो कट सीन होता है वाकई बहुत लंबा होता है। With Miss Charlotte's help, everything has gone smoothly. करने गए थे शियान्युन की स्टोरी Mechanical क्वेस्ट। kites are already available to purchase from a stall in the harbor. We're having trouble keeping up with demand. We also gave quite a bit of thought to the price. We didn't want it to be too much more expensive than a traditional kite. चलो लैंटर्न राइट भी करना ही था, तो उसका सीन तो देख ही लें। Cool. लैंटर्न राइट कर लो, मस्किन है। नहीं, लैंटर्न राइट करना है, बट अभी मैं शियान्युन की स्टोरी क्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि लैंटर्न राइट की क्वेस्ट हमेशा लंबी होती है। Toys? They're not exactly toys. You see, Miss Kuching, that does seem to be everyone's first reaction. Although kites are one of our most time-honored cultural relics, outside of their use in certain ceremonies, I suppose they're considered playthings more than हैप्पी anything चाइनीज else. दिवाली। लैंटर्न राइट लास्ट चैप्टर ओपी है। But करूँगा। there's so much more than that. Think for a second about how remarkable it is that a flimsy paper kite attached to a string has the capacity to touch the sky. It is this slight piece of paper that also carries the weight of Liyue's cultural traditions. There's an old poem that goes, "O kite born of paper, flying true in sound, a lone traveler wanders, just waiting to be found." आगे भी पढ़ ले, बस आगे मैंने पढ़ना है। सेंड देम लव, सेंड देम वर्ड, सेंड देम होमवर्ड बाउंड। थैनोस, क्या हालचाल? ये क्या आधा यार, कैसे लैंटर्न राइट इन्होंने आधे में खत्म कर दिया। लेकिन इससे कुछ ये तुम्हें स्पॉइलर टाइप का नहीं लग रहा, जैसे ट्रैवलर के बारे में बताया जा रहा है। अ लोन ट्रैवलर वॉन्डर्स जस्ट वेटिंग टू बी फाउंड, सेंड देम लव, सेंड देम वर्ड, सेंड देम होमवर्ड बाउंड। शियान्युन स्टोरी क्वेस्ट कट सीन्स देख कर रो दोगे। अरे भाई स्टार्ट तो होने दो। In the past, poets from Liyue used kites to symbolize a feeling of longing or evoke the peacefulness of idyllic rural scenery.
क्या आधा अब तक तो है ना, आधी से ज़्यादा स्टोरी है। कचिंग देख के बिल्ड करने का मन करता है। कर लो मेरे पास C4 कचिंग है। Today can derive enjoyment from this activity. They will not only be more likely to better appreciate the tradition, but also to pass it down to the people of tomorrow. That's the Kuching we know, always thinking 5 steps ahead of anyone else. Well said, Miss Kuching. I've learned quite a bit myself. चाइनीज़ न्यू ईयर पढ़ने से माइंड में कुछ आया, पर लिखना सही होगा कि नहीं वो सोच रहा हूँ। As long as Don't you're let your listen, I'm happy क्या to कहते हैं उसको, share. डोंट लेट योर वाइल्ड थॉट्स विन, ऐसे ही कुछ बोलते हैं। I also know quite a lot about the various folk traditions related to kites. अरे For बहुत होगी example, पतंगों की बात। whenever a kite blew away, people would say it was the adepti that summoned the wind to take it away as an offering. That way, you can turn an unfortunate event into an auspicious one. अबे यार इन्होंने तो लेंटन राइट को वो कर दिया, जो अपना गुजरात में फेस्टिवल होता है ना पतंगों का, बसंत पंचमी पे। ये चाइनीज़ दिवाली नहीं है, दिस इज चाइनीज़ बसंत पंचमी, क्योंकि पतंगे उड़ा रहे हैं यहाँ पे ये। अयानो कोजी कियोताका कवाई देस ने कवाई देस। यहाँ एक मंथ में 4 5 स्टार मिले, वो बिल्ड ना हो रहे, ले लो जी, एक महीने में 4 5 स्टार मिल गए, बहुत बढ़िया। इंट्रूसिव थॉट्स, यस, डोंट लेट योर इंट्रूसिव थॉट्स विन। Yes. What's the worst that can happen? You'll get banned, not a heavy price to make some people laugh. What about something more fun? Do you know anything like that? More fun. Let me think. Oh, my grandfather told me that back when he was a boy. First, you use the thin strips of bamboo to construct the frame. Then, you draw a design of then you look towards अब मैं the पूरे sky डायलॉग नहीं and सुन रहा release the because I kite have to soar among skip the it clouds. really fast. Some people write down certain names or desires on their kites, cut the string, and let them fly free. Others may place particular thoughts or meaning into the design itself. Are certain designs associated with certain meanings? Well, for example, kites in the Fascinating. What else can you tell me? The scissor-tailed Bro. swallow is the most classic design. It symbolizes good fortune and joyful. Are these commonly understood meanings and symbols in Liyue? I believe so. If you're interested, Miss Charlotte, I have several books on the topic that I could lend you. They could be a... That would be a huge help. अरे खत्म करो भाई, Looks like I Quest have start the करना है outline यार। for quite the article on. Perfect! We're gonna... Then I'll show Miss Charlotte to my... I almost forgot. The Ministry of Civil Affairs. If you're Okay, cool. interested, you're more than welcome to bring a kite, and the Cool, rules I are will. simple. Whoever flies their kite the highest and furthest... I've समझ already गए। prepared more than enough empty film. Oh, Paimon was on board the moment you said secret prize. Snehal, welcome to the stream. Welcome. They ruined 2 characters from Liyue. अच्छा ऐसा? Then I'll look forward to seeing you. You bet! See you then! चलो जी खत्म। अब चलते हैं Xianyun की स्टोरी क्वेस्ट करते हैं। चपड़ सही बात है। Traveler, take a peek to your right. Do you see those 2 people lurking over there? Is it just Paimon? Or were they staring at us the whole time we were talking to Something's up. Paimon, do you think they could be treasure hoarders? Oh, Paimon's sick of waiting around for something bad to happen. We should strike first, you know. Foil their plans before they even begin. You go right, Paimon will go left. एक बार ये कंटिन्यू करो प्लीज। नहीं भाई कंटिन्यू नहीं करना, मुझे स्टोरी क्वेस्ट करनी है। आई एम सॉरी, मुझे पहले Xianyun की स्टोरी क्वेस्ट करनी है। यहाँ पे स्टोरी क्वेस्ट लिखा है तो मुझे लगा स्टोरी क्वेस्ट होगी। एक्सेप्ट क्वेस्ट, अच्छा मैंने एक्सेप्ट नहीं किया क्वेस्ट को। अब आया लीजरली चैटर, 1000 मूनलिट माइल्स, ग्रस सेरीना चैप्टर एक्ट 1। ये yes, this is the one. We've been to so many places lately. What do you say we take a day off from adventuring and just find somewhere nice to relax? Let Paimon think. Where are some nice places we could go? Oh, why don't we pay Cloud Retainer a visit at Mount Outsong? मतलब पाइमॉन बड़ी रैंडम बातें करती है। Illuminated bird. She's always the one popping up out of nowhere and scaring us half to death. So let's surprise her this time. मतलब बड़ी रैंडम बातें नहीं करती।
कि क्या करे, चलो चल के ना उससे मिलते हैं जिससे हम कितने महीनों से नहीं मिले, आउट ऑफ ऑल द रैंडम कैरेक्टर्स। ये लो। Here we are, right outside her place. Do you still remember the first time we came here? We even brought offerings and everything. आई रिमेंबर। And when we Xianyun told her कैसा that लगा? Rex अच्छा है। Wallace had been assassinated, she immediately threatened to squash Liyue Harbor. Paimon thought she'd be impossible to get along with. But now that we've spent some more time together, ये अच्छी quest है। she's I really hope not so. like that at all. चैन्यूअल बेसिकली तुम्हें पता है फिलर रीजन है, ठीक है, तो उनको कुछ ना कुछ तो बनाना ही था बीच में घुसाने के लिए, तो बना दिया। We probably don't need to bring any offerings now that we've gotten to know her pretty well, right? Still, Paimon's got some snacks around here somewhere, so if she really wants something, we can just use that. Huh? Traveler, did something catch your eye? Whoa, what a pretty lady. Is she also here to visit Cloud Retainer? Yeah, you're right. All it takes is one look and you can tell she's someone special. Bug, 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 Paimon. Really. She must have a whole bunch of Paimon adept is friends cute. from all over Wow. the country. किसने तो बोला? Okay, but if we're both friends of Cloud Retainer, then we're basically friends by association, right? Want to go up to say hello? Helping you make more connections is a part of Paimon's job as your reliable guide. Paimon's got this. Cool. Hello. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. वाह। Paimon doesn't think we've met, but we're also friends. with जिब्रिस Cloud Retainer. का हाल चाल May I भैया? have the pleasure of learning your name, Madam Adeptus? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम बताओ का हाल चाल बा? You two. What is this tomfoolery? Has the shift in form so clouded your eyes that you no longer recognize one anymore? इन्होंने वॉइस एक्टर चेंज कर दिया क्लाउड रिटेनर का। सॉथ ऑथ दे दो, सॉथ ऑथ। अच्छा शाउट आउट दे दो। अरे भैया बिल्कुल बिल्कुल, काहे नहीं है, हमारे जिब्रिस भैया हैं। जिब्रिस भैया बहुत ही अव्वल दर्जे के मंजे हुए FPS प्लेयर हैं, ठीक है। इन्होंने आखिरी बार हेडशॉट मारा था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसके बाद से उन्होंने हेडशॉट नहीं लगाया। कोशिश पूरी करते हैं, तो किसी को इनके हेडशॉट देखने हो, पट से हेडशॉट हर तरह के FPS गेम्स में, तो इनका चैनल फॉलो कर सकते हो। यार इन्होंने क्लाउड रिटेनर का वॉइस एक्टर क्यों चेंज कर दिया? तो मुझे ये बताएगा। ये बाकी सब चेंज किया तो चलता है, बट क्लाउड रिटेनर का वॉइस एक्टर तो वो वाली वही वाली सही थी। बताओ यार। तो मैं की झूठ बोलिया, मैं सच्ची तो बोलिया हैं। Wait, huh? You're the illuminated bird? But you look human. How did that happen? वॉइस एक्टर सेम है, बस पिच सॉफ्ट कर दी। अच्छा Oh, donning human form is scarcely any test of one's हाँ abilities. सेम है, सेम है। As for your confusion, one merely had no reason to indulge such inclinations before. So, you're indulging now because? Well, one has made plans to pay a visit to some disciples at Liyue Harbor. Taking on a human form for such a trip is simply a way to make matters आवाज look सही है, conspicuous. मुझे लगा चेंज हो गई। You? Worrying about keeping a low profile? You're the one who likes to pop up out of nowhere all over the place. In fact, Paimon can think of several examples. Like last year, when you suddenly appeared on the top of a roof without any warning. जैसे पाइमोन की सॉफ्ट थी, पाइमोन की सॉफ्ट नहीं थी, पाइमोन की आवाज में पहले पर्सनालिटी नहीं थी। अगर मैं सही बताऊं तो पाइमोन की जो वॉइस थी स्टार्टिंग के अंदर वो वेरी पर्सनालिटी लेस। अब कम से कम पाइमोन के पास पर्सनालिटी तो है, इरिटेटिंग पर्सनालिटी है कई लोगों के लिए, बट कम से कम पर्सनालिटी तो है। Hey, didn't we agree not to bring that up unless she asked? Oh, so you have taken care to follow the proper rules of etiquette after all. Most commendable. Well, हर पैच पे वॉइस आए, नहीं नहीं Paimon's got, you ऐसा don't कुछ नहीं mind, है। right?
एक बार सेट करके छोड़ दिया है। One has never found oneself lacking in basic comforts. On the contrary, it is the gesture that one values above all else. So long as you've shown proper respect and consideration, the quantity or quality of the gift is but a trivial matter. That kinda makes Paimon feel a little guilty for trying to keep them for herself. Anyway, where were we before you reminded Paimon about the gifts? Ah, right. So by disciples, you must mean Ganyu and Shenhe. It's also been a while since we last saw them. Maybe we can come too. One planned to extend the invitation even if you had not raised the matter yourself. Shenhe and Ganyu should be quite pleased to see you again. However, one would first inquire as to the reason behind your visit here. You have cause to seek one's company? Yeah, we just found ourselves missing you and wanted to see how you were doing. We were hoping you'd tell us one of your stories. Who knew we'd run into your human form while we were at it? अगर पिछले 3 साल से उसने अपनी ह्यूमन फॉर्म कभी नहीं दिखाई, अब अचानक से दिखा रही है। Is that so? And what a human form, if I must say so myself. If there are no urgent matters at hand, then let us make haste for Liyue Harbor. Ganyu is likely still working at Yuehai Pavilion, so that shall be our first stop. मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास सिस्टम आई ट्रैकर वाला सिस्टम नहीं है। एक होता है ना जो आपको दिखाता है कि आई आँख कहाँ पर है। रिमेंबर पहले बहुत सारे स्ट्रीमर्स लगाना शुरू किया था कि आपको आपकी आँख मतलब वेयर आर यू एक्चुअली लुकिंग वो स्क्रीन पे दिखाता था। आई एम सो ग्लैड इस टाइम नहीं है वो। ओह वेलकम टू द स्ट्रीम टीटीजी गेम्स। अरे हाँ वही तो बात है, इसलिए तो हम ज़्यादा नहीं कर रहे। Sounds great! Then let's all go to Liyue Harbor! Yes, I know. Yeah, I know TTG. 1,000 moonlit miles. बहुत अच्छा Ganyu has है। been quite busy with work as म्यूजिक of बहुत late. प्यारा है यार ये वाला। One can count on one talon the number of times she returns to Mount Outsong each year. Shenhe has also secured employment recently. In her correspondence with me, she wrote that she shall have no need to return for the foreseeable future. Did they think one was so easily mollified? One shall investigate everything with one's own eyes and decide for oneself if their living conditions are satisfactory. क्या है आज टीका लगाकर हो? अरे आज मंडे होता है ना, मंडे को मैं मंदिर जाता हूँ। आई ऑफ द स्टॉर्म, इसे तो कितने टाइम से नहीं पेला मैंने। आज भी कोई कुछ खास मूड है नहीं इसको पेलने का, बट खैर क्या कर सकते हैं। हाँ भाई Fuse is lit! ओह, मैं भी कहने वाला था कि ससुरा कुछ देके नहीं जाता। चलो अच्छी बात है, कुछ तो देकर गया। मैं इतना दूर क्या रोल करके जाने वाला हूँ? What am I thinking? And away I go! इतना दूर रोल करके तो नहीं जाने वाला मैं। यहाँ से जाएंगे। हैंटा आई, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल चाल? ई हैकर, Alleyways Pavilion! वेलकम टू द स्ट्रीम। Hey, do you think Guys, like Ganyu दबा will देना be सब जो आ रहे हैं। a cloud retainer like this? Guess we have no idea if Shenhe and Ganyu have ever seen her in this form before. Wait, where did she go? Why are you just standing there, cloud retainer? Quietly now. One shall stay here. You two can go and meet with her. But why? Isn't it better if we all go together? If one were to proudly proclaim one's presence, Ganyu would surely profess herself otherwise unoccupied and drop everything to attend to one's visit. Make up for lost time. नकरमेंसर भाई, थैंक यू फॉर द 4 months। वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हालचाल? थैंक यू, रियली अप्रिशिएट इट। घूमने वगैरह गए नहीं क्या
कहीं गए थे भाई, बिल्कुल गए थे. One does not wish to trouble her. अब दोबारा जाएंगे. Conversing vicariously via you two shall suffice. Do remember to inquire as to her recent well-being. Again, do not mention one's presence here. Fair enough. Makes sense. All Para right, then, boy, we'll welcome to just the pass on stream. your regards and... Cloud retainer? Oh, Oh, busted. Is that lady someone you know, Miss Ganyu? She is indeed. I'm sorry, Huixin, but could we delay the upcoming मस्त meeting for a म्यूट little करके bit? स्ट्रीम देख रहा हूँ. I म्यूट believe करके. my schedule today is quite full. वाहे. Although, perhaps I could move some work to later in the evening. नेक्रोमेंसर आ गया है. हालांकि ही मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी. इसने अपना नाम नेक्रोमेंसर रखा, बट जो स्पेलिंग नॉट मॉड ने बताई, ये स्पेलिंग रखी जा सकती थी बहुत आराम से. ये स्पेलिंग रखी जा सकती थी. Oh, not to worry, Miss Ganyu. I'll make the necessary arrangements right away. Thank you, Huixin. It's been a while, Ganyu. Greetings. What brings you here today? हेडफोन्स खराब हो गए हैं अभी Cloud ऑफिस में. retainer ओह too. अच्छा, ऐसा. It's been quite some time since I last saw you in this form. you are quite mistaken. One is not acquainted with this cloud retainer of whom you speak. One is simply a mere mortal passerby. Seems she's not buying it. गाइस एक मिनट, मुझे जरा एक मैसेज का रिप्लाई करना है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. Okay, Ganyu saw right through her. That was. Ronnie, welcome to the stream. Lucifer, welcome to the stream. One did not expect you to be able to recognize one so easily, especially after so many years of only seeing one's other form. नाहिदा सीवन हो गई रॉनी. मुबारक हो, मुबारक हो. अब C2 करो उसको. C2 में ज़्यादा मज़ा है. भाई प्रीमो जेम्स कहाँ मिले हैं? कहाँ मिला है? प्रीमो जेम्स कहाँ मिला है मतलब? प्रीमो जेम मिलेंगे यहाँ पर जब तुम क्वेस्ट करोगे, तो यहाँ मिलेंगे प्रीमो जेम्स तुम्हें. But recognizing you is, my responsibility as your disciple. An apt observation. One was simply passing by while attending to some important business. One thought it would only be fitting to pay you a visit while in the area. Wait, Paima wasn't aware of any important... Cloud Retainer's right! We've still got something super important to do, so we can't stay here for too long today. Oh, is that so? But it's been so long since we last saw each other. One simply desired to see you and had no intention of interrupting your work. A quick conversation should suffice for today. A more involved reunion should wait until you find yourself less occupied. I understand. That should be fine. While one acknowledges the amount of work that you have to deal with every day, one must also remind you to rest. Though Adepti blood flows through your veins, excessive exhaustion will still cause grave harm to your body. It still makes one nostalgic to see you as you are now, respected and independent.
When you were young, you oft begged I am me to Atomic. hug Welcome you to the stream. and Welcome, welcome, suffer from welcome. nightmares. Cloud Retainer! Stop! If you insist. We are running short on time regardless, so one will refrain from going into each and every story. Why don't you continue your conversation? One shall simply stand by and listen. Wow, you've been to so many new places since the last time we spoke. If you ever need anything, please just come find me at Yue High Pavilion. Also, forgive me for my presumptuousness, Cloud Retainer, but if you plan to continue appearing in this form, don't you think it'd be helpful to adopt a human name? True. A human name? Huh. You raise a valid point. रुको लोग यार, मैं भी आपके साथ Considering the शैन्यून का sheer क्वेस्ट कर लेता extent हूँ. of one's renown, अब यही टाइम मिला तुम्हें मेरी Cloud स्ट्रीम के बीच में Retainer शैन्यून is क्वेस्ट surely करने के too लिए ना, recognizable as a name. है ना? You really think so? Not that you're not famous or anything, but that famous? You presume to know the extent of one's illustrious achievements. One would hardly think such a thing to be possible. Nevertheless, Ganyu's advice cannot be ignored. From this point on, when in public occasions, be sure to refer to one as Xianyun. शैन्यून. Xianyun? Ah, I assume that's a reference to the full record of Pristine Pavilion. An adeptus of years past would rise with the clouds and rest with the moon. They were enlightened and wise, free and unfettered. The writer referenced Master's name to describe her carefree and spontaneous nature. Oh, that sounds super cool! मेरे क्वेस्ट आपके स्ट्रीम पर देखूंगा, एंड गेम में डिबेट दबाते जाऊंगा. अच्छा वैसा कर लो. Actually, those lines were originally written to describe Cloud Retainer herself. Huh? Wait, so you're really that powerful? And what of it? Did you truly take one to be nothing more than a bird of bigger than average size? Not exactly. To be fair, Cloud Retainer rarely speaks of her past accomplishments. The tales of her past can only be found in ancient texts. It is said that once, a long, long time ago, there was a severe drought in Liyue. Left with no choice, many people left their homes, while others spent day and night praying to the Adepti. Although I did not live through such tragedy, simply reading about it is enough to gain a visceral understanding of all the pain and desperation during that time. On top of the drought, a noxious gas also began to spread through the land. If not for Cloud Retainer's efforts, much of Liyue would be nothing more than a barren wasteland today. The books had this to say about what happened. Upon arrival, the Adeptus borrowed the wind to retain the clouds. Immediately, the clouds gathered together, and abundant rain burst forth from the heavens. Drought and plague were both ओह, driven तो away. इस वजह से इसका and the नाम people क्लाउड were रिटेनर है, saved. बिकॉज शी रिटेन्ड क्लाउड्स. सो ये वजह इसका नाम क्लाउड रिटेनर होने की. Wow. That's incredible! Mortal records at Mr. events, Savage, long welcome to the time stream. events. After a long One time, victory yes. was one ought. Very long. And even if one had not interceded, the other Adepti would surely have stepped in to help. Even so, you stopped an entire drought! Can you really control the weather like the book said? Oh, Paimon. क्या हालचाल? क्या चल रहा है? So it was Paimon's bad for calling you Illuminated Bird before. You're not too mad, are you? How laughable. A name is but a simple label we carry with us on our journey through the world. Why would one be offended by such a trivial matter? That's a relief. In that case, Paimon will continue to call you whatever feels right in the moment. Well, that is quite enough ancient history for now. Ganyu, have you had word from Shenhe? One has heard that she procured a job recently.
Have you any thoughts on her workplace? And what, pray tell, of her monthly remuneration? सैलरी पूछ रही है Does she उसकी. find herself overly inundated with work? Is she allowed time off during Lantern Rite? That is a lot of questions. There is no cause for concern, Cloud Retainer. I introduced Shenhe to her employer personally. Wanmin Restaurant's business has been booming recently. So, with Chef Mao being swamped with customers, and Shangling still off and out in search of new recipes, I introduced Shenhe to staff the restaurant. शनहा रेस्टोरेंट में काम कर रही है. शनहा वेटर है. शनहा की स्किन वो वाली बनानी चाहिए, तो फ्रेंच वेट्रेस नहीं होती जो. I see. Most excellent indeed. One has had the pleasure of being introduced to that family. Shangling is kind and astute, while her father is loyal and reliable. One has no cause to believe that they will make Shenhe's work difficult. Now, it is almost time to partake in the victuals of noon. One shall visit Wanmin Restaurant in person and see how Shenhe is doing. Huh? But didn't you just say that you had something important to do? Can that wait until after we've eaten? You may return to your work, Xianyun. One shall see to this matter on one's own. There will be many an occasion to dine together in the future. One is certain the opportunity shall present itself most readily. Cool. Of course, Cloud Retainer. Please take care. Traveler, Paimon, I'll see you some other time. See you around, Ganyu! कौन है भाई? ये कौन सा टाइम है मेरे इस वर्ल्ड में आने का? मैं स्टोरी क्वेस्ट कर रहा हूँ. Paimon was pretty quick on the uptake there, don't you think? As soon as you mentioned important business to attend to, Paimon realized that you were just looking to cut the conversation short and not take too much of Ganyu's time. Is Paimon right? No, in fact, it was not an excuse. One is indeed visiting Liyue Harbor for an important purpose. Wait, for real? The moment is not yet upon us. Still, the truth will be revealed to you in time. Okay, cool. She really Arjun said, welcome to the playing up stream. The whole mysterious Adeptus thing right now. Is it because we just heard that cool story about her powers? ये आ गए वानमिन रेस्टोरेंट. तो शनहा काउंटर पे खड़ी है, क्या बात है? You get what I'm saying, right? Yeah, how can I not? Not even fine food is enough to distract from the presence of a fine lady, huh? देखा, यही होता है जब रेस्टोरेंट में किसी को ऐसे को खड़ा करते हैं. I'm far more interested in getting her details than ordering any dishes. Hey, how about you ask her? और क्या नंबर मांगोगे उसका? You do it. No. I think you should. Wait. देख एनपीसी से भी रहा नहीं जा रहा, वही तो. What can I get for you today? बताओ. This is so out of character. भाई बंदी को इन्होंने वेट्रेस बना दिया. Greetings, miss. I was just wondering if you'd be willing to... What would you like to order? 2 servings of Mora meat to go. Good chat. Bye. अबे लेते ऑर्डर तो लेते जाओ भाई. पलट. Welcome. देखा पलटी. It's been a while. May I take your order? Don't welcome us as guests and greet us as old friends in the same line. It's weird. Mm-hmm. Oh, and this is? भाई शनहा को न्यू आउटफिट में नर्फ कर दिया. हैं? क्या कह रहे हो? This is Miss Xianyun. Master? One does not recall ever revealing this form to you before. How were you able to ascertain one's true identity with such ease? I've trained and lived with Master for more than 10 years. I would recognize you no matter what form you take. Is something the matter, Master? Hardly. One simply learned of your employment from your letter and came to check on your well-being. इमोशनल हो गई मामी. And check out the great food, too. Indeed. It's almost lunchtime. My apologies. I'm still on the clock and can't talk for very long. Well, if it isn't the traveler in Paimon. Are you here for Shenhe? The lunch rush isn't in yet, Shenhe. So, I've got things covered for now.
Go ahead, sit down and enjoy some time with your friends. I'll let you know if things pick up. Thank you, Chef Mao. ये तो बेसिकली लैंटर्न राइट का पार्ट लग रहा है। ये मेरे को लग ही नहीं रहा कि मैं कुछ वो कर रहा हूँ, शियान्यून की स्टोरी क्वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है लैंटर्न राइट चल रहा है। किधर जाने का है? हाँ Leo's really got a lot going for it. अबे यार हमारी धर्मपत्नी पंखा चला के क्यों चली गई यहाँ पे? It is just as one expected. The owner of Wanmin restaurant is पंखा चला के चली गई फुल ब्लास्ट पे। accommodating human. मैं जरा पंखा बंद कर दूं 1 मिनट। पंखा काहे चला दिया भाई? अरे पोछा तो हम ऐसे सूखा देते हैं, तो पंखा चला दिया, ठंड लग रही है हमको। कौन सा कैरेक्टर लिया आपने? कहाँ से? Still, the work मैंने भी लैंटर्न राइट किया नहीं। dealing with quite a varied group of people. Has this been difficult for you, Shenhe? I have not done lantern right now. It's been manageable so far. I sometimes run into strange people, but I have figured out a way to deal with them. Seems like you've been making progress. So by dealing with them, you mean... First, I try to talk sense into them. If that doesn't work, I threaten them with violence. At this point, they usually decide they are in favor. फ्री 4 स्टार चूज कर सकते हैं इवेंट के बाद। हाँ वो मुझे पता है, बट अभी मैंने सोचा नहीं है। शिंगचो तो नहीं लूंगा, मेरा शिंगचो ऑलरेडी C6 है, तो और मेरी शांगलिंग C6 है। आई डोंट थिंक इन दोनों में से कोई होगा। शिंगचो तो शायद होगा, अभी देखते हैं, हो सकता है गामिंग ले लूं। How should Paimon put this? Oh, a sensible plan. One is gladdened to see you integrate so well into human society. And you, Master? How have you been? Simply marvelous. Though Mount Outsong has scarcely enjoyed your presence recently, one has hardly found the pleasure of one's own company to be lacking. I see. Just as expected of Master. I have missed Master quite a bit too. Even though work has been busy lately, I've already had a conversation with Chef Mao about taking some time off soon to visit Master. Oh, you did? Do make note of such matters in your letters in the future. There's hardly a need to keep one in suspense. Whoa. Her mood shot up just like that. By the way, Master, since you are in Liyue Harbor, have you had the chance to visit Ganyu? Indeed. She is similarly preoccupied with her work. There was time only to exchange a few simple pleasantries. Ganyu told us the story of Cloud Retainer's name. It was amazing. We never knew how powerful she was before. क्लाउड रिटेनर का नाम क्लाउड रिटेनर से पहले क्या था? मैं ये जानना चाहता हूँ। I see. In that case, allow me to also share a story about Master's past. Oh? Is that a problem, Master? I believe this to be a good topic of conversation. No, not a problem. One was simply caught off guard. But no matter. Please, proceed. One is most curious to see how much of one's own conversational prowess you possess. Master once participated in a race against Mooncarver. After Mooncarver lost, he insisted that Master's ability to fly gave her a natural edge in such a contest. In response, Master agreed to forego flying in return for being able to use one of her devices in the race. Mooncarver accepted, only to find Master with a brand new device on the day of the contest. वैसे सोचने वाली बात यह है कि अगर क्लाउड रिटेनर का नाम क्लाउड रिटेनर इसलिए पड़ा क्योंकि उसने वेदर को कंट्रोल करके क्लाउड्स को एक साथ रिटेन किया और बारिश करवाई, तो सोचो मून कार्वर का नाम कैसे पड़ा होगा? क्या उसने मून को कार्व किया? दैट मीन्स मून कार्वर इज मच मोर स्ट्रॉन्ग। What kind of device was it? Jetpack. It was a mechanical vehicle made out of iron. What was it called again? Electro-powered bicycle. Oh, Tesla. Electro-powered bicycle? Oh, you refer to the bicyclical Thunder Flashmobile. One spent 49 days conceptualizing and crafting it. It need only be infused with adeptal energy, and it can cover thousands of miles in one day. Okay. Oh, it boggles the mind why Mooncarver ever supposed he might best me in a contest of locomotion. Though he sprinted with all his might, he could barely keep up.
Alas, the one flaw of my mechanism lay in its weakness against mountainous terrain. अबे तुम सब लोग चुप One क्यों हो was गए भाई? thwarted mere seconds from victory when it was thrown off course and failed to make it across the final stretch. Truly a most unfortunate turn of events. बताओ. Anyway, do go on, Shenhe. Master, that was the end of that story. Is that so? Huh. With you gone, one has seldom felt the desire to call upon those old fossils for another contest. What is a race without spectators, after all? Have you been lonely, Master? Yes. Lonely? Huh. At one's age, entire human generations come and go in the blink of an eye. Even one's own self-directed musings can span several days and nights. Mm-hmm. 'Tis a most foreign sentiment. The mere mention of it is preposterous. What is the reason for that look upon your face? It's nothing. It's just... Well, Paimon gained a lot of respect for you after listening to that story of you summoning the rain and everything. But all it took was a few words out of your mouth and it's like you're back to being that illuminated bird again. सब जगह मीम चल रही है कि शियान्युन और जोंगली सन. शियान कौन? शियान कौन है? I was just a little bit confused. Which one of the two is the real cloud retainer? To me, they are both, Master. One is the Master that's widely revered by the people, while the other is the Master that I respect and adore. Huh. One finds oneself exalted yet again with sweet words of praise and flattery of a most extravagant nature. You chose to exalt one with your words, yet you refuse to grace Mount Outsong with your presence for any extended period of time. One would almost question the sincerity of your estimations. शाओ बोल रहा है. अच्छा शाओ. शियान्युन और जोंगली का बच्चा. ये कैसी थ्योरी है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? This is not to say that your words paint an inaccurate picture. One has always lived by a single ideal. Eschew all action and abide by no rule. One does as one pleases and speaks as one pleases. Others may critique or praise as they see fit. Yet one places little weight in such judgments. She got like, what, 2 sentences of flattery from her disciple? हालांकि and it शाओ sounded का like her ego was about to burst. जो वो है, what do you say, डिजाइन है, इट इज, मैं मतलब आज की डेट में तो ये कहना चाहिए कि शियान्यून्स डिजाइन इज इंस्पायर्ड बाय शाओ. ऑलमोस्ट सेम कलर थीम, वो सारी चीजें. बट हो सकता है बेटा वहां पे क्या हो. Do you have any empty tables? Hey there, could we get another fish stew? I'm hearing more guests come in. I should get back to work. Alright, good luck with the lunchtime rush, huh? I'll try my best. अब कहाँ जाना है? और भी कोई तीसरा बंदा रह गया? So much yummy food! Paimon's gonna feast! One is fond of all kinds of delicacies and delights in a multitude of flavors. The dishes here demonstrate no shortage of culinary skill. Their unique flavor profile has left one more than satisfied. In fact, one has been struck by quite the fit of inspiration. One has already begun to conceptualize the next generation of supreme cuisine machines. Xianyun is helped to plunge. Zhongli uses polearm. Okay. But यार कोई वो थोड़ी है, DNA थोड़ी है. It is like something. Everything's so tasty! Shao has 2 of at this. times, but still super tasty. I can see, actually. I'm sorry, miss, but our tables are full. Shall we try somewhere else, Granny? But it smells so delightful. Can we really not eat here? अरे सुमेरु से आए My हैं. legs can't go on for much longer. ये तो सुमेरु से आए हैं. Well, you could always check with some of the other guests and see if anyone's happy to share a table. Okay, I'll ask around. Excuse me. Would you mind letting us share a table with you?
There are no empty tables left, so... Ah, well, Paimon doesn't mind. What about you guys? Great! Thanks so much. My name is Xianyun, and this is my granny, Yuendai. Granny? Yep. Is there something wrong with that? No, Paimon's just a bit surprised. She looks so young. Yeah, a lot of people compliment Granny on her youthful looks, but she's actually much older than she appears. Okay. So does she. But यार ये पता ही क्या तुम उसके डिजाइन की तुम वो देख रहे हो इंटेलिजेंस ये ह्यूमन फॉर्म में बर्ड लग रही है. Granny, why don't you take a seat? Come on, it's not polite to stare. Huh. Have we met before? No. Tis a fated meeting then. Please, take a seat. What would you like to eat, Granny? I can order for you. I want braised earthworms. They always pop up out of the ground after a rainstorm. Yeah. No. ये शाओ भी बर्ड है Xianyun भी बर्ड है. Granny, there's no braised earthworms on the menu. Braised earthworms? Well, that sounds weird. Do people actually eat that? Birds खाते हैं earthworm. Right, that's what Paimon was thinking too. Need any help? Help? Oh, do you mean with Granny? Thanks, that's nice of you to offer. Granny has pretty bad dementia, so her memory's getting worse all the time. Okay. She's always saying things that sound kinda confusing. Actually, her memory's been bad ever since I was little. But it's gotten so bad lately that I even have to remind her who I am every morning. They died young. It's just me and Granny now. Oh, but it's okay. Don't feel bad. Granny loves me a lot, and I love her a lot too. Sure, it's hard at times, but you just gotta make the best of the life you've got. Wow, you're really tough for your age, kid. You're too kind. And me? Oh, what about me? You're tough too, Granny. Plus, you're really gentle, and you're always there for me. खाना ऑर्डर कर लो आने में टाइम लगेगा. ये बातें तो बाद में भी हो जाएंगी. Yes, and it's hardly as if I forget everything. I still remember the important things. Wait, what was that really important thing again? Ah, I remember now. It was a dream. I had a dream where everything was dark. Someone was standing in front of me. She told me to come and find her, and that once I'd found her, I would be free. Cloud retainer? Huh? That sounds super important. But how come you've never told me about it before? It was just a dream, so I forgot about it. But I'm in a good mood now, and somehow I remembered it again. You know, I believe I've had this dream a great many times. But just how many times have I had it? Now that I do not remember. Wait, so you have a reoccurring dream where someone's talking to you? That sounds spooky. Does that mean you're possessed? Unlikely. Her eyes are clear and her breathing remains calm and level. One sees no signs of possession. Are you sure? Who do you take me for? Is one not an adept? Am I not an expert? You're right. Paimon almost forgot you're the expert. In that case, do you still remember what the person in your dreams looked like, Granny? Not anymore. Although, I have a sense that she looked rather like me. But not as I am now. My younger self. A younger version of Granny? This is just getting weirder and weirder. What is going on here? As one said, fate must have brought us together. You may leave this situation to me. Are you sure? So, what are your names? Paimon's Paimon. Just Xianyun is fine. Thank you all so much for offering to help.
but first, I'm sorry for asking, but, how do you want us to pay you back? Oh, we don't need any payment for this. Thank you so much. You're welcome. But आपका हाईएस्ट क्रिट कितना है अभी तक? exactly can we do to help out this grade? हाईएस्ट क्रिट यार, मुझे लगता है मेरा क्रिट रेट कभी भी किसी भी उसके ऊपर कैरेक्टर के ऊपर अब तक शायद 70 to 73% से ऊपर नहीं किया है। All we have to go off is that dream. Where do we start? That is elementary. Since her dreams portray her younger self, then we shall retrace the steps of her youth. Once we have revisited those places, her memories will likely return. भाई पहले खाना तो खा लो, खाना खाने के लिए बैठी थी वो यहाँ पे। Sounds like a plan. So, Granny, do you remember which places you went to when you were young? Why, of course I do. The heavens above, the earth below. Okay, taking that as a no. तुम क्रिट रेट पूछ रहे हो, क्रिट डैमेज पूछ रहे हो? तुमने क्रिट बोला। Once when I was really little, my dad told me that Granny used to be a martial artist heroine who saved loads of people from a disaster. Okay. If it's true, then maybe they wrote about it in the history books or something. A martial arts heroine? Oh, Shinjo knows tons about Liyue's chivalric traditions. If anyone knows about the heroes of the past, it's him. Let's go find him at the Feiyun Commerce Guild. Are you leaving already? But I'm still hungry. I'll go order some food, Granny. If there's nothing on the menu you especially want, I'll just get a few different things. It seems we must part ways for now. The Traveler and Paimon are bound for the Feiyun Commerce Guild, while Yuendai and Shuyu shall remain here and partake of their lunch. As for myself, I have matters to discuss with Streetward Rambler. Streetward Rambler, कौन बताएगा कौन है Streetward Rambler? मैडम पिंग। हाईएस्ट डैमेज ही बता दो। हाईएस्ट डैमेज मेरा 500,000 क्या है? 500 समथिंग या तो 475 के राउंड। Oh, you mean Madam Ping? Precisely. Let us meet at Yujing Terrace once you are ready. Cool. Always wanted to try this place. Everyone, please eat to your heart's content. अबे ये क्या है? ये स्क्रीन के ऊपर इतना बड़ा बड़ा कैसे आ गया था? Always wanted to try this place. अच्छा इनका वो है क्या डायलॉग बॉक्स? Where are you going, Granny? Don't you like the food? Fresh milk. I need to buy you some fresh milk. Milk? Why? You need to drink milk before eating, or the spicy food will make you cry. Hush, little one. Don't cry. Hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Granny, you're forgetting things again. I'm not a little baby anymore. I can eat spicy food now. Even the super spicy dishes, like their fish stew. I can eat 2 whole bowls, no problem. Stiffen that upper lip up. Little lady, I told you, daddy's gonna hold you through the night. Wonderful. Oh, wonderful. My darling granddaughter is all grown up. I know mommy's not here right now, and we don't know why. Everything's gonna be alright. Okay. अब किधर जाने का अपने को? यूजन टेरेस। क्या सड़क पे खड़ा होकर किताब पढ़ रहा है? इतना अमीर है, सड़क पे खड़ा होकर किताब पढ़ रहा है। It's you two. What brings you here? Shinjo! Great, we found you! We wanted to ask you about something. That's not a whole lot of information to go off of. I don't know if I can say for sure.
I can't pinpoint her identity from your description alone. But considering her age, I am reminded of a nameless heroine who's been featured in various chivalric novels. Nameless heroine? That's right. The novels often speak of a great drought from 50 years ago. As the people suffered, a nameless heroine appeared and began to clear away evil spirits and bandit camps. The people idolized her, but never learned her name. Okay. ड्राउट के टाइम पे तो क्लाउड रिटेनर ने भी काम किया था, तो कहीं ऐसे टाइम तो नहीं मिले दोनों के दोनों? All they knew was that she always acted alone. Later, though, she supposedly fell in love with a similarly noble-minded exorcist from Mount Tianheng. They were well matched in more ways than one, often fighting together as a fearsome duo of otherworldly strength. शिंगचू का न्यू आउटफिट देख के लगता है कि उसने फुरीना के कपड़े चुरा लिए. मैंने देखा आउटफिट, हाँ, काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है, काफी ज्यादा. After the drought ended, the heroine and the exorcist left the public eye and began living a reclusive life in the mountains. All that remained were tales of her incredible accomplishments. The way this nameless heroine faded from fame into obscurity later in life is not too dissimilar from Miss Yuendai. I hope that's somewhat helpful. Thanks a lot, Xingqiu. We knew it'd be worth talking to you. It's nothing at all. Just something I came across while reading. I did do a bit of extra research on her story, but it was just out of personal curiosity. Well, Paimon still thinks that's super cool. Oh, wait, Xingqiu, if you've read up on her, do you know of any places often associated with her? Let me think. In the novels, the nameless heroine always appeared near one of 3 places. Wangshu Inn, the area just north of Jueyun Karst, and Qingyun Peak. Perhaps the real-life heroine who inspired the character was also often seen near those 3 places. That would explain why those locations appear in the various novels written about her. Deedarjot, welcome to the stream. Hello, hello, hello. You're welcome. To be honest, I found some parts of the story confusing when I first came across it. If Miss Yuendai was indeed the original inspiration for the character, she may just be able to help me put the pieces together. It's rare for a chivalric hero to fade into obscurity during their lifetime, even after retiring from the public eye. But no one ever saw or heard from the nameless heroine again. There were even rumors that she became extremely ill. I've never understood why someone would go to such lengths to erase themselves from public memory. It's almost as if she was trying to hide from something. There's probably far more to the story than what's been written. We'll be sure to tell you if we manage to uncover the truth. That's a deal. Perhaps, behind the truth of it all, there lies a story more fantastical than any work of fiction. Maybe. Feels like we just learned so much from Xingqiu. A drought, a nameless heroine, a life of seclusion. Wait, why does the story sound super familiar? क्योंकि Xianyun की स्टोरी है ये. Oh, right! There's a drought in this story too! Xingqiu, are droughts super common in Liyue or something? Well, they used to be. But people have long since developed methods to prevent them, like by cultivating the soil or digging canals. So while droughts do happen from time to time, they are rarely regarded as true disasters. The drought 50 years ago is probably one of the worst we've had in the last several centuries. The crops withered, the streams ran dry, and the monsters in the mountains became rabid and agitated. Countless caravans were attacked, and people who lost their homes came together to form bandit groups. What started as a natural disaster soon became a human tragedy as well. That sounds awful! Yeah, and that's exactly why the nameless heroine was so beloved. She must have been someone of true integrity, to do so much for the people while asking nothing in return. Still, as terrible as that drought was, it was nothing compared to the truly calamitous disasters that befell this land in ancient times. They say that back in those days, disasters were both more severe and more common. Only the strongest of Adepti could hope to dispel the ruin and devastation. Do you have any other questions? We're good for now. We're just going to head back and meet up with Miss Xianyun and the others again. Paimon hopes that Granny Yuendai will be able to remember more of her past. She used to be a great hero who saved many people.
so sad that she can't recall any of it. Anyway, we'll be off now. See you some other time, Xingqiu. Thank you so much for your help. It's no Cool. problem at all. Safe travels. Squall Fury. अबे, कमाल है. Behold. बताओ, इससे बेस्ट तो मुझसे चढ़ जाता काजुआ से. Squall Fury. अरे यहाँ किताबें कैसे पढ़ी है मैं? Quit following me. किधर किधर किधर? इधर इधर मैडम पिंक के पास. I have recorded the tune that you requested. I hope it will be of help to you. Oh, thank you. यार ये भी तो अडेप्ट है. ये भी तो कोई डंकी सी जवानी वाली शक्ल ले सकती थी. हैं? Straight word, Ping. What has amused you so? Oh, it's no serious matter. I was just reminiscing about the last time I saw you in this form. Time has wrought such change in this world, and yet you appear just the same as ever. Time has little bearing on one's existence, nor has one keenly felt its effects whilst dwelling at Mount Outsong. Nevertheless, Ping, one would like to seek your counsel on a personal matter. ये दोनों सेम एज है. फिर भी वो बुढ़िया का उसने वो रूप लिया हुआ है. Oh, why so formal all of a sudden? I must say, you're making me a little nervous. Well, the inquiry is as such. Approximately how much more would one need to afford a comfortable life in the harbor, not unlike the one that you yourself lead? It does not require as much as you may think. Still, do you mean that... Cloud Retainer, Madam Ping! What are you two talking about? Nothing save for some trivial matters. Have you unearthed any useful details? तो क्लाउड रिटेनर जो है बेसिकली लोगों के बीच रहना चाह रही है. बोर हो गई पहाड़ों में रह रहे. But let's save it for when Chuyu and Miss Yundai have joined up with us again. Do not be troubled, young lady. Here, have some tea. Thank you so much. कैसी है क्वेस्ट? सो फार इट्स ओके. अब तक ऐसा कुछ भी क्वेस्ट में नहीं हुआ ना जिसमें कुछ मुझे इंट्रीगिंग लगा हो. हाँ मतलब कि ये इंट्रीगिंग चीज़ चल रही है फिलहाल. बट इनकी क्वेस्ट सारी ऐसी होती हैं. स्टार्टिंग में दे आर नॉट दैट ग्रेट. धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं. What do you think, Chuyu? Does it match up with what you know of your granny? बोर हो गई है. According to the पहाड़ों में रह रह के बोर हो गई है. the nameless heroine eventually वो चलेगी fell in love दादी with इसकी. an exorcist from Mount Tianheng. Maybe that's my grandpa. किराए आने वाले थे ना भाई. अब तक तो नहीं आया किराए मेरे I को. don't have many memories of him, but there was this one time I found a box in our attic full of a bunch of weird sigils. I think so too. Granny might remember something once she's returned to a familiar place. What marvelous tea. I can taste the dew's sweetness in this cup. It's as if I was taking a stroll in the mountains, thoroughly one with nature and at peace. Is that so? Then please drink as much as you like. There's no need to hurry. At our मून age, कार्वर it's माउंटेन always शेपर nice को to slow दे down and take the का time ह्यूमन to फॉर्म है. appreciate pleasant conversation. उनका ह्यूमन फॉर्म पता नहीं कब दिखेगा. Thank you. Okay, since we have the time, can I ask you something? Sure thing. What would you like to know? I have a secret I want to tell you. Ooh. Let's go talk over there. छोटे छोटे बच्चों के सीक्रेट होने लगे भाई आजकल. क्लाउड रिटेनर वांट्स माउंटेन्स टू फुलफिल हर. कैसी बातें करते हैं. You can taste the sweetness of the dew?
It's just a feeling. The sensation of stepping out into the mountains on a cool morning, gazing upon the small droplets of water hanging from the leaves. Atomic शांत रहो, आर्कॉन ने नहीं किया है अभी तक क्वेस्ट. हाँ मैंने क्वेस्ट नहीं किया इसलिए तो कर रहा हूँ मैं अभी तक. With every swallow. It's a sense of calm and serenity, one that stretches on and on until days become weeks, weeks become years. Mm-hmm. Too slow. किधर जाना है? What's wrong, Xianyun? Well, I've been kind of meaning to ask ever since we started talking in the restaurant. But are you guys all adepti in disguise? Oh! About that. Well, you guys just seem super special. Plus, I think I might have heard Miss Xianyun call herself an adeptus. Must have been a slip of the tongue. Xianyun, since you were the one who, misspoke, maybe you can explain to Xianyun here what you really meant by that. One is indeed an adeptus. Is that of some concern to you? I knew it. Well, one time when I was a little kid, I saw a pure white illuminated crane. यही है वो crane. I had this super high fever, and Granny wasn't around. I was feeling all icky and gross. पैल वर्ल्ड कैसा चालू है? पैल वर्ल्ड सही चल रहा है. पिछले 2 दिन से खेला नहीं मैंने क्योंकि मैं घर पे नहीं था. बट इट्स गोइंग गुड. मज़ा आ रहा है. करूँगा कंटिन्यू से मैं ऑब्वियसली. पैसा देकर खरीदा भाई. बहुत रेयरली ऐसा होता है मैं कोई गेम फुल प्राइस पे खरीदता हूँ. 1300 रुपये की गेम खरीदी हुई है मैंने. वो खेलूंगा तो ज़रूर. She put me on her back and flew me to her cool adeptus house and fed me some sort of magic potion. When I woke up, I was already back in my bed and my fever was gone. बच्चा चुरा लिया इसने बताओ. I really wanted to thank her, but I was too sleepy to stay awake, so I never got the chance. So I just kind of wanted to ask if maybe any of you have ever met an adeptus like that? ये खड़ी है तुम्हारे सामने. A pure white illuminated crane? The only two we've ever met are blue and white and black and brown. Have you ever met one that's pure white, Clavertina? Pure white? Never has one met an adeptus. अच्छा pure white. अच्छा फिर तो ये नहीं है. One surmises such a description is but a hyperbolic embellishment that oft results from narrative accounts. That's weird. Was it really just a dream then? Well, even if it was just in my head, it doesn't matter that much anyway. All I really want is to help Granny recover her memories. हो सकता है इसकी ग्रैनी ही हो. Pure white. Leave it to us! Now that we know the 3 locations, we just need to visit them one by one. Let's go to Wangshu Inn first. Okay, I'll go get Granny. चले वांगसू इन जहाँ पर हमारे जनरल अलाटस रहते हैं. यू नो गाइस जनरल अलाटस. यू डोंट नो जनरल अलाटस. Wangshu Inn. Wangshu Inn. Do you remember this place, Granny? Yes. The fish here is very delicious, and if you look out into the distance, you can always spot a bird that's been left behind by its flock. I believe I used to have a room here. It had a window. Yes, I spent a lot of time looking out that window. Which room was it again? Let me look. I'll come with. यहाँ रहती थी ये. I'm still having some trouble understanding what she's talking about, but if she's so familiar with this place, that must mean she lived here, right? Ishwari, welcome to the stream. How are you? How are you? Daijoubu desu ka?
मुझे लग ही रहा था आ जाएगा। ये देख रहे हो दोनों भाई, सही बात है, मुझे तो लग रहा है इसी का बेटा है ये, जॉन ली जूनियर, मिस्टर जॉन ली जूनियर। I sensed a non-human presence and decided to come take a look. If you're here, then there's likely no trouble afoot. I suppose there's no cause for concern. कहाँ हो गए? कहाँ हो गया? खाना हो गया? नहीं, खाना भी नहीं हुआ। It's been a while, Cloud Retainer. I see you have returned to your previous form. I have indeed. I fought alongside her in this form on many occasions. खाना बन रहा है यार। आजकल मुझे नींद बहुत आती है, बहुत ज़्यादा। Oh wow! What was she like during the war? Oh wait, let Paimon take a guess. Was it anything like this? Behold, the glory of one's newest invention, the Bang Bang continuous fire mechanism. Bang Bang continuous fire Or mechanism. be prepared to face the full might of the Adepti. Bang Bang continuous fire mechanism. मैं हूँ स्ट्रीम में। ओके नेक्रोमेंसर, सोते कम हो क्या? अरे नींद पूरी नहीं हो पाती, सोते कम नहीं है, पता नहीं ज़्यादा भी सोता हूँ तो भी नींद पूरी नहीं होती, पता नहीं क्यों। An impressive imitation. Paimon knows her all too well. Even so, Cloud Retainer was not always as ostentatious as you describe. You may be unaware, but her talent with Adepti sigils is ऐसा लग रहा है कि नाविया का बर्स्ट है। skill and mechanics. यस। The Arkhon War reached its peak after Guizhong's death. The Cloud Retainer who fought beside me in those devastating battles was taciturn and solemn, only speaking when she had to activate her sigils. सोने देते नहीं होगा। A Cloud Retainer who barely talks? Paimon can't picture it. But what happened after that? If you were so powerful in your human form, why did you decide to take up your bird form again? डॉक्टर की स्टडी कर रही हो क्या बहन? रही हो क्या ऐश्वरी जी? पता नहीं। माही वेलकम टू द स्ट्रीम। अरे आप कौन भैया, क्या हाल है? बड़े दिनों बाद दिख रहे हो। बस देख लो जितना दिख रहा हूँ उतना यार नहीं हो पा रहा। मैं क्या कहते रेगुलर ना, क्या बोलूँ मैं, ना मैं कंटेंट बना पा रहा हूँ। ओह माय गॉड, ना मैं कंटेंट बना पा रहा हूँ। Pulled for bird lady? No 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 no. 84 पिटी में जाके 50-50 हार गया मोना की। लवनीत भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। Once one had bid farewell to the world of mortals, what use would one still have for such a shape? When dwelling between mountain and forest, away from the struggles and troubles of the mortal world, a mortal form is hardly the most fitting of choices. अभी तक मेरी मेंबरशिप ओवर नहीं हुई है। हाँ चली रही है यार फिलहाल तो। After the war, आई एम Cloud Retainer retired ग्लैड to फॉर Mount दैट। Outsong, आरिगातो गोजाइमास। only revealing herself to the occasional visitor, and always in her avian form. Although I do believe there was an occasion some 30-odd years ago, when she decided to don her human form. I believe it was for the purpose of... One believes there is little need to relive bygone Ooh. matters. फॉर द पर्पस ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ ह्यूमन फॉर्म में आने का पर्पस क्या था? कोई ह्यूमन ही होगा। Granny, are you okay? Back then, at this place, आगे में सबसे पहले हम हरियाणा वालों को थैंक्स बोलो, स्पेशली जो पंजाब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं। अच्छा ऐसा का है? मैंने मेरे फेवरेट स्नैक्स मंगाए हैं अमेज़ॉन से। अभी खाना बनाते बनाते वही खाऊंगी। खाना बनाते बनाते स्नैक्स खाऊंगी, फिर खाना कौन खाएगा? कैन यू रिव्यू माई अकाउंट? शीरो अभी तो मैं यार अकाउंट रिव्यू कर नहीं रहा हूँ, अभी तो स्टोरी क्वेस्ट चल रही है। सो इफ़ यू वांट अकाउंट रिव्यूज यू हैव टू वेट आफ्टर द स्टोरी क्वेस्ट इज फिनिश्ड, उसके बाद करूँगा। Perhaps this conversation should end here. I shall take my leave now. Should you encounter any trouble, you need only call my name. However, given that you are traveling with Cloud Retainer, I trust you are in good hands. आप दिल्ली वालों के लिए हम सह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कोई सह ही क्यों रहा है? हैं? सब सह रहे हैं भाई। खाना घर वाले खाएंगे। अच्छा तो आर यू होम और आर यू एट योर प्लेस? ऐश्वरी जी अगर आप डॉक्टर होते तो अच्छा होता, सबका फ्री में इलाज हो जाता। क्यों भाई फ्री में क्यों? फ्री में काहे करती इलाज फिर वो?
Slowly now, calm your mind and recount what has been recalled. A long time ago, I stayed here to recuperate from my illness. अच्छा, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे इंटरनेट बंद कर दिया है। ये तो यार इंडिया के अंदर ना इंटरनेट तो ऐसे बंद करते हैं, मतलब कि जैसे बिना इंटरनेट के लोगों का काम नहीं चलेगा। जिसको इन्फॉर्मेशन फैलानी होगी ऐसे फैला देगा वो। पता नहीं, सबसे पहले इंटरनेट बंद होता है। काजुमा, वेलकम टू द स्ट्रीम, क्या हाल चाल। ये मैं बीच टॉपिक में आए कुछ नहीं समझ रहा, कौन क्या बोल रहा है। किसके, मतलब स्टोरी के क्वेस्ट के बीच में आई हो या हमारी कॉन्वर्सेशन के बीच में आई हो? क्योंकि हमारी कॉन्वर्सेशन तो नए नए तरीके से स्टार्ट होती है। Was that why you went into hiding? I don't remember. I'm very sorry, but I can't even remember the name of my illness. The only thing I can remember. आपका बेस देखा मैंने अनुबिस स्टैचू के पास। अरे अभी तो उस बेस को मैंने कुछ भी ढंग का नहीं बनाया हुआ यार। उस बेस को धीरे धीरे बनाऊंगा मैं। अभी मेरे दिमाग में क्या है ना, पैल वर्ल्ड को लेकर अगर बात बोलूँ तो पैल वर्ल्ड को लेकर अभी दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं कि मुझे ये काम पहले करने हैं पैल वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, वो काम हो जाएंगे, उसके बाद मैं बेस बिल्डिंग पे ध्यान दूंगा। जोरो, वेलकम टू द स्ट्रीम। आगे बढ़ी जल्दी। आपकी कॉन्वर्सेशन स्टोरी तो मैं आधे टाइम ध्यान नहीं देती, स्पॉइलर मिल जाता है। अच्छा, मेरी कॉन्वर्सेशन, लोग कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, मैं उनका कुछ ना कुछ जवाब देता रहता हूँ। चलो मैं चली खाना बनाने। ओके, शाम में स्ट्रीम पे आना। किसके स्ट्रीम पे? अरे तुम भी स्ट्रीम कर रही हो? ये कब स्टार्ट हुआ? तुमने कब से स्ट्रीम स्टार्ट की? वैसे दिल्ली में 10 दिन में इंटरनेट बंद हो जाए तो लोग सड़क पे आ जाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। दिल्ली में इंटरनेट कभी बंद होता है, लेकिन अगर इंटरनेट बंद होता है तो लोगों को आना चाहिए सड़क पे प्रोटेस्ट करने के लिए, चाहे कहीं भी बंद हो, दिल्ली हो चाहे कहीं भी हो। आई एम होम एट नगर। अरे बट व्हेन डिड यू स्टार्ट स्ट्रीमिंग? I was confined to my room in Wangshu Inn, where I spent many days unconscious. I'd come to every once in a while and stare at the migrating birds outside the window. It was a solemn sight. I remember crying, but I'm not even sure I knew why. तुमने स्ट्रीम कब से स्टार्ट की यार? One day, I met a traveling merchant. Upon hearing of my illness, he sold me a bottle of soul-revitalizing tea pills. Oh, ये है यंग। Nice. He told me that the pills were concocted using adepti blood and could be used to alleviate my symptoms. Sure enough, I made a full recovery. हाँ, लिंक भेज देना मुझे। My illness remained dormant for several decades. जा रहे हो लवनीत भाई? चलो यार, थैंक यू फॉर कमिंग ब्रो। Why are the foreheads unnaturally long? किसके? I just started about a week ago. चलो अच्छा यार, I'm glad to know that you started streaming. Wait, but if your illness remained dormant for several decades, are you saying that what you're going through now is just a relapse of what happened all those years ago? And it was all thanks to the pills that you managed to keep the symptoms in check? Paimon's brain kinda hurts. Do you remember anything else? I'm sorry, I don't. Old hag. Old तो कहीं नहीं लग रही है। I wasn't so useless. Hey, you're not useless. You've done so much for me. Watched me grow up. Raised me. How could you say that about yourself? Oh, fret not, dear child. Granny was just a bit frustrated. That's all. The recovery of a person's memories is a gradual process. Finding pieces of one's past is always superior to not finding anything at all. Let us make haste to the next location. याओ वेयर? याओ पता नहीं भाई कहाँ पर है। आपने अभी तक थैंक्स नहीं बोला। आर्कन भाई, अरे थैंक यू फॉर द 10 रुपीज फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड ऑफ ऑल थैंक यू हम दिल्ली वालों को बचाने के लिए ट्रैफिक जाम से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Next location. Next location. Oh, why don't we go to the area north of Dwayun Karst next? There isn't really a landmark there, so where should we start? Oh, Paimon's got it. Let's check out the houses
in the area first. अच्छा, you didn't announce it yet. Okay, चलो अब यहाँ तो अनाउंस कर दिया ना. गुड गुड. लिंक भेजना मुझे डिस्कॉर्ड के ऊपर. After all, if she was there for any length of time, then she would have stayed somewhere, right? Oh, Paimon's really got her thinking cap on today. At this rate, we'll recover all of Granny Wendai's memories in no time. अच्छा, कलरीना को बुला था. Not mod. Thank you for taking the membership. Thank you for 2 months in the Sealy gang. I really appreciate it, bro. Okay, इन 3 जगह जाना है तो चलो यहाँ से यहाँ चलते हैं पहले. चैट मिस, अरे कोई बताएगा किसकी स्ट्रीम कितने बजे है और कौन से चैनल पर है? अरे ईश्वरी जो है वो स्ट्रीम कर रही है शाम को, और जब स्ट्रीम करेगी तो हमारे डिस्कॉर्ड में आके वो भेज देगी. सेल्फ प्रमोशन के अंदर लिंक भेज देगी. ये रहे बड़े लोग. Thank you, Jadu. Thank you, Jadu. Thank you, Jadu. Thank you, Jadu. Lavneet bhai, thank you for the 10th once again. By the way, we are stand with Haryana government decision. जो किया है दिल्ली के लिए किया. Okay. Things are getting too political here, but मैं ज़्यादा पॉलिटिकल होता नहीं हूँ यार अपने चैनल के ऊपर. Not mod, thank you for the 19 rupees bro. Thank you. I really appreciate it. Naughty भैया, धन्यवाद. Let me think. I feel माही भी करने वाली है. हाँ, माही भी करने वाली है. बोला तो काफ़ी टाइम से हुआ माही को कि स्टार्ट करे स्ट्रीमिंग. पता नहीं कब करेगी. I don't think I stayed here too long. सेल्फ प्रमोशन में आके डाल देना डिस्कॉर्ड में जो भी स्ट्रीम करे. Briefly before continuing on my way. Got it. That's okay. There are still plenty of other places we can check. Wait a second. If I remember correctly, I believe I brought... Ah, yes. I brought some sweet snacks Thank you, with Jadu. me. Thank you, Jadu. Thank you, Jadu. Thank you, Jadu. If you want to grow big and strong. Oh, thank you. Then Paimon will help herself. आई एम छोटा शाय एंड स्केयर टू अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ पीपल. अरे स्टार्टिंग में होता है. स्टार्टिंग में इट गेट्स लाइक दैट, बट धीरे धीरे आदत पड़ जाती है. कल बोल तो रही हूँ आज रात में या कल तो कर लूँगी स्टार्ट. ओके चलो ठीक है. सेल्फ प्रमोशन में ज़रूर डालना क्योंकि मैं वहीं चेक कर पाऊँगा. ऐसे मैं चेक नहीं कर पाऊँगा. मैं आजकल थोड़ा फ़ोन भी कम ही खोलता हूँ अपना. Gotcha. Here comes the catch. See you in the evening. Bye. Take care. ओके, अभी ऊपर जाना है और नॉट मॉड को देखो, बिंदास स्ट्रीम करता है, प्रो प्लेयर. अरे भाई यूट्यूब इंडिया चली नॉट मॉड की स्ट्रीम की वजह से रहा. अब इतनी ऊपर आ ही गए हैं तो और क्या नोटी, हम क्या झूठ बोल रहे हैं. तुम स्ट्रीम ना करो तो यूट्यूब इंडिया बंद ही हो जाए. सुकासा is lonely for 3 weeks now. सुकासा कौन है? This place. It's... इसका घर है क्या? Did you remember something, Granny?
Xianyun, this is where your father was born. It was a moonless night. I had been injured, so your grandpa was supporting me. We fled together with some being in the fog behind us in hot pursuit. Ooh, abyssal monster. I had exhausted my strength when the labor pains came on, so we took refuge in this house. Your grandpa set up a barrier outside, but neither of us knew if it could hold the monsters back. अल्ट्रा को कॉल करे, टाइम आउट दिलाता हूँ जोरो को. नहीं, नेक्रोमेंसर है ना यहाँ पे, वो दे देगा. हालांकि वो म्यूट पे देख रहा है स्ट्रीम, तो उसको पता नहीं चलेगा उसकी बात हो रही है. I remember that night. I remember falling to my knees, reciting a prayer over and over. I alone am the source of this sin. Punish me as you wish for forsaking my oath, but spare my innocent child. Sin? Oath? Did you do something wrong? I don't know. I don't remember. I only remember praying in the darkness with all my strength until the sun finally rose again and the fog cleared out. Eventually, the house was filled with the sound of my baby's first cries. That baby was your father. I remember I clutched him tight to my chest and wept tears of joy. It was the first time I'd ever felt such happiness in my life. My dad? He was my pride and joy, and so are you, Xianyun. You're so much like him, and I love you both so much. But you're always going to be different from me. Why? Just what did I do? You're always going to be different from me. I don't care what you might have done, Granny. You'll always be the person I love more than anything. You're too sweet, Xianyun. I'm lucky to have you with me. If not for you, I would not have had the courage to come here, to try to remember what I had forgotten. All right. Let's not stand around any longer. There's one place left, yes? Let's go take a look. राइट में क्या है यहाँ पे? If one recalls correctly, the next place should be Xianyun Peak. You and I, how fares your health? I may be a bit slow. What is this? But I'll do my best to keep up. I'm sorry to keep everyone waiting. Climb on. I shall carry you to the top. Oh, such lightness of weight. All those who grow old grow frail in the end, do they not? First, क्रेजी गेम है ब्रो. अकाउंट रिव्यू करोगे स्टोरी क्वेस्ट के बाद, बीच में नहीं. Eventually, you end up losing everything. My only wish is to depart this world with a lucid mind, to free myself of this torment and the burden it places upon others. ये बोलना बंद करे तो मैं चेक करूँ कि ये क्या है. Fret not. You have my aid in this endeavor. हो गया. What is this? आए और भी है क्या यहाँ पे? आगुन सर, आपका बैंक अकाउंट किस बैंक में है? मेरे पास यार 2 बैंक अकाउंट हैं. एक मेरा एक्सिस में है, दूसरा मेरा फेडरल बैंक में है. ओ बोसेशियस. ये तो शायद हो चुका है. आई गेस दिस इज डन, है ना? ये सारा का सारा लाइट अप हो चुका है और तो कुछ है नहीं. वहाँ पे क्या है? वहाँ आग जल रही है या कुछ और है? Busted.
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर ये वाला हो चुका है। गगन वेलकम भाई, वेलकम वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल चाल? ए भाई तू जा ना, तेरे से लड़ना नहीं है मेरे को। लड़ने का है तेरे को, लड़ने का है तेरे को, लड़ने का है हैं? तेरे को लड़ने का है मामू, ले लड़ ले। हो गया है ना, भूल गए आप शायद मुझे। अरे तुम्हें काहे भूलेंगे भाई। एक तो मैं भी स्ट्रीम पर पिछले टाइम काफ़ी टाइम से कम आया हूँ, तुम भी नहीं आए। नॉट मोड इधर भी, नॉट मोड इधर ही रहता है। नॉट मोड को मैंने पैर में चेन डाल के बेसमेंट में बंद किया हुआ है अपनी, तो वो यहीं रहता है आजकल, वो कहीं जाता नहीं है। These prisms remind me of that initial Venti Arkhon quest where we had to collect and deactivate the rings on Storm Terror Tower. Yeah. Yes, yes, yes. मेरी फुरीना बिल्ड देखो, सब बिल्ड वगैरह सब देखी जाएगी क्वेस्ट होने के बाद। Does this place feel familiar to you, Granny Wendai? Let me see. हर जगह मिल जाता है, Strange. पूरे दिन यही करता है यार ये। Lived here before? When we were at Wangshu Inn and the abandoned house earlier, though I couldn't remember everything, I still felt a sense of familiarity. I could easily picture myself in those places. But here, I don't have that feeling. Perhaps I did come here in the past, but it just didn't leave a strong impression on me. But did the stories get it wrong then? Yeah, that's true. But they're also the only thing we have to go off of. Paimon was hoping this place would jog Granny Wendai's memory just like the others. मुझे जॉब से स्ट्रीम से जॉब मिलता नहीं टाइम ज़्यादा स्ट्रीम पे जाने का। अच्छा, जॉब से टाइम नहीं मिलता स्ट्रीम पे आने का, यही तो होता है मेरे साथ। पिछले 2 महीने से तो यही चल रहा है कि मुझे टाइम नहीं लग पा रहा। मैं कभी कहीं बिजी होता हूँ, कभी कहीं बिजी हो जाता हूँ। स्टोरी वीडियोस का क्या चालू है सर? एनी प्रोग्रेस अपडेट्स? स्टोरी वीडियोस का भाई अभी बीच में रुक गया था, 1-2-3 वीडियोस बन के फिनिश थे, बट जैसे कि मैंने कहा मेरे पास कम से कम 10 वीडियोस होनी चाहिए डालने के लिए, तब जाके मैं उनको पोस्ट करना शुरू करूँगा। वही यार, पता है लिखना पहले तो क्या था, जैसे कि सपोज करो 3 घंटे की स्टोरी क्वेस्ट है, तो उस 3 घंटे की स्टोरी क्वेस्ट को बैठ के मैं 3 घंटे तक देखता हूँ, फिर उसको लिखता हूँ, फिर उसे रिकॉर्ड करता हूँ, फिर उसे एडिट करता हूँ। तुम समझ रहे हो? इट्स नॉट दैट ईजी, ठीक है। और स्टोरी क्वेस्ट को समझना भी पड़ता है, उस क्वेस्ट को, कोई भी पर्टिकुलर क्वेस्ट है उसको समझना ही पड़ेगा ना, नहीं तो बताऊंगा क्या। हमारी राइडन देखनी थी जनाब। यार सारी की सारी सब कुछ देखूंगा स्टोरी क्वेस्ट के बाद। अगर आप मेंबर हो तो मेंबर्स का मैं कभी भी देख सकता हूँ, बट आई वुड प्रेफर कि एक बार स्टोरी क्वेस्ट हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा लंबा चलती है, तुम्हें पता है स्टोरी क्वेस्ट। I'm sorry to disappoint you too. नहीं तो मैं नॉट मॉड लेवल का बेरोजगार था पहले। नॉटी क्या बोल रहा है तुम्हें? क्या बोला जा रहा है तुम्हारे बारे में? तुम बेरोजगार हो? It's all right. We're not going to give up yet. We'll figure something else out. Just you wait. Thank you. If only I could remember. आर्कॉन आरआर मार्टिन ना बन जाए कहीं। Huh? That way. What's that mountain? Oh, let Paimon look! Huh? Isn't that Mount Outsang? Looks like we've come full circle. Mount Outsang. Mount Outsang. कितनी 45 मिनट की स्टोरी क्वेस्ट बची है कि हाँ बस 45 मिनट, ज़्यादा नहीं। Granny, are you okay? हाँ मैं वही बेरोजगार हूँ जो कुछ स्ट्रीमर्स पे वेल्किन चमकाता हूँ। Don't push yourself, Granny. It's okay if you can't remember. You shouldn't do something that makes you sad. Mount Outsang, What am I really? Mount Outsang holds some familiarity to you? It does, but I can't go back. Are you feeling unwell? My head, it feels all heavy and dizzy.
wrong with me? Cloud, Miss Xianyun, is there anything you can do? Let us go to Mount Outsong. But... Fret not, all will be well. You and I, you have already given more than enough to the pursuit of this endeavor. मैं बार बार कह रहा हूँ आई एम सो ग्लैड कि इस टाइम मेरे पास आई ट्रैकर वाली टेक्नोलॉजी नहीं है जो स्ट्रीम पे दिखाती कि आपकी आंखें कहाँ पर है। लॉन्ग टाइम नॉट स्ट्रीम, अरे हम तो यार बस हो जाता है कभी कभी। नॉट मॉड रिच बेरोजगार है, ये बात भी सही है, हो सकता है। Something that can aid you in suppressing the fear in your heart and restoring your lost memories. It currently resides at Mount Outsong. Wait, really? When did you do that? I never leave anything to chance. All will reveal itself when we arrive. चलो जी ठीक है, लेट्स गो। गगन भाई ने फेस कैम स्ट्रीम्स चालू कर दी हैं, क्या बात है। Here, this is it. Huh? But isn't this the mechanism that you were tinkering with when we first got here? Oh, is it another invention of yours? Precisely. A recent one at that. I am most pleased with the result. I call it the Suspensus Somnium mechanism. It periodically releases a soft breeze, which when paired with a gentle adeptal tune, can help the listener subconsciously relax and even enter a semi-hypnotic state. Soothing agitation and anxiety, relieving exhaustion and insomnia, its potential uses are numerous indeed. And of course, it can also aid in the recovery of lost memories. Oh, what a cool gadget! But if you had it all along, why did you keep it to yourself until just now? We could have come to Mount Outsong right off the bat and saved time on a lot of floating. How preposterous. Had you and I not recalled much of her past through her own efforts, the device would have nothing to draw upon. We Adepti can only help those who first resolve to help themselves. Had she lacked such determination and strength of character, one would have little to offer in way of assistance. True. Paimon thinks she gets it now. Hey, what's that other thing? As previously mentioned, a gentle adeptal tune is required to take full advantage of the mechanism. One secured such a tune from Streetward Rambler. Only with her melodies can the mechanism reach its peak power. Okay. Oh, Paimon can feel what you mean. Paimon's body feels light as a feather. It's as if she's lying down on a warm patch of grass after a super satisfying meal. मुझे समझ नहीं आता गेंशिन पॉपुलर क्यों नहीं हो रही। ब्रो गेंशिन पॉपुलर है, गेंशिन इज पॉपुलर इन इंडिया, ठीक है। द रीज़न इज कि बहुत सारे जो लोग गेंशिन खेलते हैं ना, उनके लिए एक तो गेंशिन इज़ नॉट द प्राइमरी गेम दैट दे प्ले। ये मेरी थॉट्स है, मेरी पर्सनल थॉट्स है कि एक तो उनके लिए दिस इज़ नॉट द प्राइमरी गेम दैट दे प्ले। वो कुछ और भी खेलते हैं, जैसे कि हो सकता है उनके लिए वो पबजी अगर ज़्यादा खेलते हो, गेंशिन साइड में खेलते हो तो इतना ज़्यादा प्यार ना हो उनको उससे, ठीक है। और दूसरा दे डोंट एक्टिवली लुक फॉर स्ट्रीमर्स जो गेंशिन खेल रहे हैं, इंडिया में तो खासकर नहीं। समझ रहे हो, वरना इंडिया के अंदर गेंशिन स्ट्रीम करते हुए लोगों को रेगुलरली स्ट्रीम करते हुए 2 साल से या 3 साल हो चुके हैं, और स्टिल आज की डेट में कई बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं स्ट्रीम के ऊपर जो कहते हैं अरे वाह इंडिया में गेंशिन स्ट्रीमर भी है। तो ये रीज़न भी है। तो इट्स नॉट दैट कि हाँ इंडिया में फेमस है, बट पीपल प्ले द गेम, दे डोंट एक्टिवली लुक फॉर स्ट्रीमर्स या कंटेंट क्रिएटर्स, ये बात है। 69 ईयर्स से खेल रहा हूँ। आकित्सुकी वेलकम, क्या हालचाल? And you and I, is the mechanism helping you to relax? सो गई तो। It appears she has already succumbed to the depths of reverie. Come, join one on this side. We shall give her some time to herself.
The drought is over. But why do you look like you want to cry? कैशू लवर आ गया. All just good. Got really busy with work. सही है यार, काम से busy रहो और क्या. The potion. It's nearly run its course. I've never regretted meeting you. Not even for a second. आपको पता है अभी दिसंबर में कोई 98 का हो चुका है, सिर्फ 100 इयर्स और लाइफ रह चुकी है. अच्छा तुम दिसंबर में 98 के हो गए हो, क्या बात है, क्या बात है दद्दू, गगन दद्दू. Please. Please, no. गेंशिन को पॉपुलैरिटी हमारे आर्कॉन बढ़ाएंगे. भाई सब ट्राई कर रहे हैं, हर स्ट्रीमर ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से. हम भी ट्राई कर रहे हैं. मेरा तो बस बीच के अंदर रह गया था, कुछ टाइम से कंटेंट नहीं बना पा रहा. This is the world you left behind. One of gentle breeze and morning dew, perfectly straddled betwixt the realms of heaven and earth. This is your home. This is where you belong. You should have never left. यही है. The you of the past, the me from not that long ago. We should have never. युआन दे कहीं क्लाउड रिटेनर की मम्मी तो नहीं? So that is the truth. No wonder this place is so familiar. Granny! Granny, are you okay? Cloud retainer. Your memories have returned. Wait, did you just call her by her full name? Does that mean क्लाउड रिटेनर जानती थी ये कौन है. you already knew each other? Yes. I now remember everything. Everything. Granny, please don't cry. I'm here. I'm here. Oh, don't worry, my dear child. Granny is fine. I'm so sorry, everyone. You've gone to so much trouble on my behalf. It's all come back to me now. The most important thing that I had forgotten was the truth of what I once was. Adapters. One can sense the guilt that now plagues your conscience. Reclaiming a truth long buried is sure to come with a myriad of complex emotions. Perhaps one should recount the story on your behalf while you compose yourself. No, it's okay. Now that I've remembered, I must face my memories head on. Shuyu, everyone, I cannot thank you enough for all your help. I'm ready to tell you my story, if you're willing to listen. Please, Granny, don't force yourself. What happened in the past doesn't matter. I love you more than anything. Nothing you say can change that. अबे तो चुप हो गई शुयून. Not everything is about you. मेरा बस 100th बर्थडे सा पहले 1 के होंगे, मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा. अभी कितने हो गए? I know, dear child. My feelings for you are exactly the same. It is for this reason that you deserve to know the truth. Some time ago, I made a terrible mistake. One for which I could never atone. Is this the sin that you mentioned in Xianyun Karst? What happened? I am, in truth, not a human being. My real form, one that I held for centuries, was that of a wild crane. 550 हो चुके पर आज तक कोई रेड नहीं लिया. रेड नहीं लिया या रेड नहीं आया? I spent many, many years living on Mount Outsong, bathing in the soft breeze and drinking the sweet dew of the mountains. At some point, I somehow gained wisdom and sentience. The Lord of the Mountain, Cloud Retainer, became aware of my existence and began to share many stories with me. She even passed on the secret of cultivation to me. अच्छा रेड करा नहीं किसी ने. होता है यार, होता है.
मेरे 2000 हो गए, मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स में आज तक सिर्फ एक ही बार रेड हुई है, वो भी रेड नहीं थी, पता है क्या था, वो भी रेड नहीं थी, वो तो किसी कोई और स्ट्रीम कर रहा था तो उसने मेरे चैनल को शाउट आउट दे दिया था, स्वैगर स्ट्रीम कर रहा था, शाउट आउट दे दिया था, और उसमें से भी उस टाइम पे 30 या 35 सब्सक्राइबर आए थे, दैट इज़ द मोस्ट आई हैव गॉटन, बाकी सब मेरी खुद की मेहनत का है। अब मैं कहता हूँ अपनी मेहनत से ऑर्गेनिकली बढ़ाओगे ना ज़्यादा फायदा रहेगा। अब तुम बताओ, क्या कहते हैं, राज भाई स्ट्रीम करते हैं, उनकी इतनी बड़ी ऑडियंस है, मैं कभी भी नहीं बोला कि यार अपने स्ट्रीम पे ज़रा मेरे चैनल का नाम ले देना एक बार, क्योंकि मुझे पता है कि लोग नेचुरली आए ना ज़्यादा बेटर होता है, हमेशा इट इज़ ऑलवेज बेटर। ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है ना उससे तुम्हें कोई नहीं छीन सकता। Though she never took me on as a formal disciple, I always saw her as my master. Whenever she took out her tools to work on mechanisms or new inventions, I would also stand next to her and watch. शॉर्ट्स में फोकस करूंगा, करो। देखो यूट्यूब के ना 3 कंपोनेंट है, यूट्यूब के 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो मेकिंग एंड शॉर्ट्स, ये 3 कंपोनेंट है यूट्यूब के। मेरे हिसाब से कोई भी यूट्यूबर अगर क्या कहते हैं उसके पीछे कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, बहुत बड़ी टीम समझते हो ना, जो मतलब एस्टैब्लिश यूट्यूबर हैं, मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले, जो प्रॉपर टीम लेके चलते हैं, जिसमें कंटेंट राइटर है, एडिटर है, उनका काम होता है सिर्फ रिकॉर्ड करना, बाकी सारा काम टीम संभालती है। सिर्फ वही एक ऐसे हैं जो ये तीनों के तीनों एस्पेक्ट्स जो हैंडल कर सकते हैं। वो स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी बना सकते हैं, शॉर्ट्स भी बना सकते हैं। हम जैसे लोगों के लिए क्या होता है, इन 3 में से कोई भी 2 काम अगर हम कर रहे हैं ना ढंग से, तो भी हमारे चैनल बहुत अच्छी तरह चल जाए। ईदर यू फोकस ऑन स्ट्रीमिंग एंड शॉर्ट्स एंड नथिंग एल्स, ठीक है, या यू फोकस ऑन लॉन्ग फॉर्म कंटेंट एंड शॉर्ट्स। आपकी शॉर्ट्स आपके लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को लिंक करे जाके, मतलब समझ रहे हो, तुमने कोई लंबा वीडियो बनाया, उस लंबे वीडियो को आजकल तुमने देखा होगा जब तुम किसी की शॉर्ट देखते हो यूट्यूब के ऊपर, तो नीचे ना टाइटल में आप किसी वीडियो को लिंक कर सकते हो। जो बंदा शॉर्ट देख रहा है उस टाइटल पे क्लिक करके, डिस्क्रिप्शन जो टाइटल होता है क्लिक करके सीधे वीडियो पे जा सकता है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू मेक अ लॉन्ग फॉर्म वीडियो, और वो उस लॉन्ग फॉर्म वीडियो का एक समरी वीडियो जो है ना, या एक इंट्रीग वीडियो होता है जिसमें लोगों को थोड़ा सा इंट्रीग जाके देखने के बाद उसका एक शॉर्ट बना सकते हो, ठीक है। शॉर्ट को डालो और शॉर्ट के टाइटल के अंदर अपनी लॉन्ग फॉर्म वीडियो को वो कर दो, लिंक कर दो, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, यू फॉरगेट अबाउट शॉर्ट्स एट ऑल, ठीक है, तुम फोकस करो अपनी लाइव स्ट्रीम के ऊपर और अपनी लॉन्ग फॉर्म वीडियो के ऊपर। तो 3 में से 2 पे फोकस करो। जब तुम्हारे पास जनता थोड़ी सी बढ़ जाए, तुम्हारे पास थोड़ा पैसा आने लगे स्ट्रीम से, तब तुम तीनों पे फोकस करना, ये तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा हो तो। ये मैं रियलिस्टिक तुम चीज़ बता रहा हूँ। यू कैनॉट एज अ न्यू यूट्यूबर जो सारे काम खुद कर रहा है ना, मैं पर्सनली इस चीज़ को फील कर रहा हूँ, आई कैनॉट फोकस ऑन 3 थिंग्स एट वंस। या तो मैं इस टाइम अगर लाइव स्ट्रीम छोड़ दूँ, मैं हफ्ते में अगर 2 या 3 बार लाइव स्ट्रीम करूँ, तो मैं अपना बाकी का टाइम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट और शॉर्ट्स में लगा सकता हूँ। बट अगर मैं डेली लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है स्ट्रीम में अलोन काम नहीं चलेगा। हाँ, स्ट्रीम से अलोन काम नहीं चलेगा। इट इज़ वेरी 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 हार्ड, बहुत मुश्किल है खाली स्ट्रीमर बन के वो गेन करना, अपने चैनल ग्रोथ करना, खाली स्ट्रीमर बन के नहीं होगा, नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। बहुत रेयरली कोई बंदा आता है जिसका कुछ चल जाता है, वरना नहीं हो पाता भाई। मतलब हम लोग यही बोलते हैं कि फीमेल स्ट्रीमर्स उनके लिए बहुत ईजी, बहुत ईजी। मैंने बहुत सारी फीमेल स्ट्रीमर्स को भी देख रहा हूँ, सुंदर सुंदर लड़कियां बैठी हुई, लेकिन उनके भी ज़्यादा नहीं है, नहीं ना सब्सक्राइबर है ना उनकी स्ट्रीम पर ज़्यादा लोग आते हैं। मतलब ये भ्रम था कि ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं होता। आजकल मार्केट बहुत सैचुरेट हो गई है। यू हैव टू फोकस ऑन वेरी फ्यू थिंग्स और उनको अच्छे से करो। मैं खुद अभी मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि मैं किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ अभी। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि मुझे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट थोड़ा सा ना कट करना पड़ेगा। मतलब मैं रिएक्शन डाल सकता हूँ, जैसे कि पूरी ये क्लाउड रिटेनर की स्टोरी क्वेस्ट है, ये पूरी डाल दी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, 20-25 1-1.5 घंटे का वीडियो बनाकर, या इसको पार्ट्स में बनाकर डाल दिया, ठीक है, ये कर सकता हूँ। बट आई थिंक पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि रियलिस्टिकली मैं अपनी स्ट्रीमिंग के ऊपर, और मुझे स्ट्रीमिंग अच्छा लगता है करना। आई लाइक कमिंग लाइव, इंटरेक्टिंग विद पीपल, ये मुझे अच्छा लगता है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं दूसरी किसी चीज़ पर फोकस करना चाहूँ तो आई थिंक आई विल फोकस मोर ऑन शॉर्ट्स, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। कभी कभी जब व्हेन यू रियली हैव समथिंग, आपके पास वाकई में कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बन सकता है, सीधी सी बात है। I even contemplated completing my training and becoming an adeptus in my own right. I followed her teachings, and time gradually passed us by. Until that fateful day 50 years ago. एक फीमेल स्ट्रीमर के स्ट्रीम पर गया था मैं, उसका मॉड ने मुझे हेलो बोलने पर टाइम
भाई ऐसे ही यूट्यूबर कैसे बनोगे, इसकी ट्रेनिंग दो, बिकॉज यू टेलिंग एवरीवन जेन्युइन फैक्ट्स अबाउट स्ट्रीम एंड सब्सक्राइबर। हाँ मतलब कि यार ये तो देखो कॉमन नॉलेज है, बस ये है कि नॉलेज होना और उसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ने में फ़र्क होता है। अब नॉलेज है लेकिन मैं खुद से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, बट एटलीस्ट मैं बता सकता हूँ कि हाँ ये इस तरीके से होता है। 50 years ago? That's right. Master regaled me with many stories of her past deeds. From them, I learned how she आओ saved पोलचू people पंपम, from a similar crisis in the past. आओ मिस्टर पंपम आओ। She was the one I looked up to the most. More than anything, I dreamt of becoming an adeptus like her. I wanted to travel the land like she had, relieving suffering wherever I went. मतलब उसको लगा मैं उसका व्यूअर चोरी ना करूं। यार देखो व्यूअर ना कोई किसी का चोरी नहीं करता, आई एम टेलिंग यू दैट इज अ फैक्ट, ठीक है। कोई किसी का व्यूअर चोरी नहीं कर सकता। व्यूअर जो होता है ना, जो आपका व्यूअर है, ठीक है, दैट इज लाइक योर नॉलेज। मतलब कि मैं थोड़ा सा गलत एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम ये सिंपल सी बात मानो, इफ समबडी इज वॉचिंग यू, ठीक है, अगर उसको तुमसे कोई भी कनेक्शन बना है, ठीक है, किसी भी लेवल को भी बनाओ, चाहे वो तुम्हें कुछ अंदर से मानता हो कि अरे बंदा तुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे इसकी स्ट्रीम देखनी है, डजंट मैटर कि वो उस गेम के या उस जॉनरा के कितने दूसरे स्ट्रीमर्स को फॉलो कर रहा है, अगर तुम लाइव हो तो तुम्हारे पास आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर तुम्हारे पास से कोई चला गया है, ठीक है, वो कहीं और जाके बैठा हुआ है, वो तुम्हारे पास नहीं आ रहा है, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। इस मोमेंट के ऊपर ऐसा कभी होता है ना, तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रीम पर अगर 50 लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो 50 के 50 का टेस्ट डिफरेंट है, तुम सबको केटर करोगे, समझो, तुम सबको केटर नहीं कर सकते। तुम सोचो कि क्या कहते हैं कि ये बंदा मेरी स्ट्रीम से चला गया, अब मैं इससे पर्सनल जाके पूछूं भाई तुझे ऐसा क्या लगा जो मैं तुम्हारी स्ट्रीम पे नहीं आता, वो कहे यार भाई आप ना ये करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, आप ना ऐसे क्या करो तो मैं आ जाऊंगा, तुमने वैसा वैसा करना शुरू किया, तो पता लगा वैसा करने के चक्कर में 2 लोग और चले गए, क्यों? क्योंकि उन्हें तुम्हारा पहले वाला एटीट्यूड ज़्यादा अच्छा लगता था, समझ रहे हो। यू कैनॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी वन, यू जस्ट डू योर जॉब। बहुत कर्मण्यवाधिकारस्ते, समझ रहे हो, महाभारत में क्या लिखा है, गीता में, कर्मण्यवाधिकारस्ते, तुम काम करो, तुम ये टेंशन मतलब कौन क्या सोच रहा क्या नहीं कर रहा, बिकॉज इफ यू पुट ऑन एन एक्ट लोगों को इंप्रेस करने के लिए, अगर तुम कोई एक्टिंग करके दिखाओगे, वो एक्टिंग लंबे टाइम तक नहीं चलती बॉस। हाँ, अगर आप कोई कैरेक्टर लेके आए हो, जैसे कि सपोज जैसे डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट है, डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट स्ट्रीम करता है तो एक कैरेक्टर के अंदर करता है, वो रियल लाइफ में ऐसा नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो उसके व्यूअर्स को पता है, ही इज नॉट लाइक दैट इन रियल लाइफ। वो रियल लाइफ में विग पहनकर नकली मूछ लगा के थोड़ी घूमता है, खैर मूछे तो अब उसकी असली है, विग पहनता है, ठीक है भाई। मुझे बीच स्ट्रीम में ऐड आ रहा है, हाँ तो मेरी मोनेटाइज स्ट्रीम है ना, तो ऐड तो आएगा ही आएगा। मुझे बहुत बुरा कैसे लोग हैं, अच्छा बहुत बुरा लगा, मतलब मैं तो टाइम पास को जाता हूँ, ये क्या बात हुई। श्री कृष्ण ने बोला है कर्म करो फल की चिंता मत करो, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। डेड ऑफ ड्यूटी वेलकम टू द स्ट्रीम, क्या हालचाल भाई, वेलकम वेलकम वेलकम। कर्म करो फल की चिंता मत करो, तब मोह माया पैसा सबसे ऊपर है। कहने का मतलब ये है कि यू कैन नॉट अट्रैक्ट ईच एंड एवरी वन, यू कैन नॉट होल्ड ऑन टू ईच एंड एवरी वन। तुम पॉलिटिशियन नहीं हो, ठीक, यू जस्ट डू व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। लोगों के साथ थोड़े से अच्छे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करो। मैं कभी इस चीज़ से नहीं डरता कि यार कोई मेरा व्यूअर चुरा लेगा भाई, उस व्यूअर को जाना होगा, वो आज नहीं तो कल उस इंसान को डिस्कवर कर लेगा। अब मेरे को एक, अब सोचो इंडिया में गेंशिन इम्पैक्ट क्या कहते हैं कि बहुत सारे स्ट्रीमर्स हैं, 20-20 हज़ार सब्सक्राइबर वाले हैं, 12, 15, 10, 9, 8 हज़ार सब्सक्राइबर वाले स्ट्रीमर्स हैं इंडिया के अंदर। अभी परसों एक लड़की आई थी जो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, उसने अभी गेंशिन इम्पैक्ट खेलना स्टार्ट किया था, वो यूट्यूब पे गई, उसने यूट्यूब पे सिर्फ इतना सर्च किया गेंशिन इम्पैक्ट लाइव, उसने सिर्फ इतना सर्च किया, सबसे ऊपर मेरी स्ट्रीम आई उस टाइम पे, बल्कि और लोग भी स्ट्रीम कर रहे थे जिनके मुझसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है, मेरी स्ट्रीम उसको टॉप पे नजर आई, क्यों आई मुझे नहीं पता भाई, समझ रहे हो। आई हैव नो आइडिया उसको मेरी स्ट्रीम नजर क्यों आई, वो कह रही कि मैंने सर्च किया मुझे आपकी स्ट्रीम नजर आई, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट उस टाइम और स्ट्रीमर भी स्ट्रीम कर रहे थे जिनको मैं जानता हूँ। सो इन सब के चक्कर में पड़ोगे ना, यू जस्ट डू इट। तुम्हारे इवन व्हेन यू हैव 0 व्यूअर्स, यू ऑलवेज स्ट्रीम लाइक 10 से 15 लोग देख रहे हैं। बहुत प्रवचन हो गए। पर मॉड को भी बीच स्ट्रीम में ऐड, तो मॉड हो तो क्या हुआ, ये कौन सी बात होगी मॉड को ऐड नहीं आएगा। उस दिन का बात में अब ज़्यादा स्ट्रीम पे जाना पसंद नहीं करता, क्या पता कि दूसरा स्ट्रीमर भी ये ना बोल दे। ना 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 ब्रो, रीरोल अकाउंट सेफ हैं, रीरोल अकाउंट
रीरोल अकाउंट को बेचता भी है क्या आईजी गट्स? मुझे नहीं पता भाई, रीरोल अकाउंट को बेच भी रहा है। लोग तो खुद के अकाउंट को रीरोल करते रहते हैं। हाँ, मुझे भी आपकी स्ट्रीम पहले दिखाई दी थी जब पहली बार विजिट किया था टॉप में। वही मैं कह रहा हूँ, कई बार होता है, यू जस्ट इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। मैं क्या कह सकता हूँ, उसका रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, बट आई एम ग्लैड कि ऐसा होता है। But I was still far from being a real adeptus. I possessed no ability to take on human form and fit in with the crowd. Once she learned of my desires, Master prepared a special dose of human mimicry potion for me. और ये ह्यूमन बन गई। She warned me that the potion's effects would only last 10 years, and if I were to fail to return to my original form at the end of that time, I would forever forget my past as a crane and become something neither human, beast, nor adeptus. क्या आप मुझे राइडन, याओ याओ, शिंगचो, नाहिदा के वेपन और आर्टिफैक्ट बता सकते हो? याओ याओ का तो देखो मैं नहीं बता सकता, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। राइडन को लगता है, राइडन और शिंगचो दोनों को लगेगा तुम्हारा एम्बलम, ठीक है। नाहिदा को लगेगा वो अपना डीप वुड मेमोरीज। वेपन्स जो है, राइडन को कोई भी ईआर वेपन दे दो जिसमें ऐसा ईआर वेपन जो डैमेज बूस्ट करता हो। जैसे कि अभी कौन सा राइडन का सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है कि 4 स्टार वेपन है, एक तो कैच है नो डाउट, लेकिन एक और है मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, अभी मैंने उसको यूज़ किया था, उससे बहुत अच्छा डैमेज आता है, ठीक है। वो अटैक परसेंटेज वाला वेपन है बट इट्स स्टिल वेरी गुड, वो दे सकते हो, ठीक है। नाहिदा के लिए कोई ईएम वेपन चलेगा। सैक्रिफिशियल फ्रैगमेंट्स लोग नाहिदा को देते हैं, मुझे नहीं समझ आता क्यों देते हैं, क्योंकि सैक्रिफिशियल फ्रैगमेंट्स का जो पैसिव है उसका नाहिदा को कोई काम नहीं है। और बाकी बचे या शिंगचो, तो शिंगचो को तुम सैक्रिफिशियल सोड दो, सैक सोड। भाई आपको पता नहीं होगा शायद, मैंने राइडन पुल्स लिए थे उसके बाद मैं एक अमेरिकन यूट्यूबर के स्ट्रीम पर गया तो 2-3 बंदे मुझे वहाँ बिग फैन बोले, मेरे दिन बना दिया था। अरे वाह क्या बात है। कौन सा अमेरिकन यूट्यूबर? हमारा टाइम फिक्स है 12 बजे आर्कन भाई की स्ट्रीम, 8 बजे फ्रॉस्टी की स्ट्रीम, 11 बजे पॉम पॉम की स्ट्रीम। एक टाइम था मैं दो टाइम स्ट्रीम करता था, मैं सुबह स्ट्रीम करता था फिर मैं रात को स्ट्रीम करता था, वो पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे लिए, और वो होगा भी नहीं। वेव ब्रेकर फिन, यस वेव ब्रेकर फिन राइडन के लिए बहुत अच्छा है। Oh no. So that was the source of your dementia all along. बट अगर तुम वेव ब्रेकर फिन लगा रहे हो तो तुम्हें अपना ईआर मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि वो ईआर नहीं देता, अटैक परसेंटेज वाला है जहाँ तक मुझे याद है। मुझे यार ऐसे याद नहीं रहते पता है, इसी वजह से मैं स्कूल में कभी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मुझे कभी रट्टा नहीं लगा, लिखी हुई चीज़ों का ना कभी रट्टा नहीं लगा पाया मैं। 3-4 मंथ पहले 6-7 गेंशिन स्ट्रीमर पे जाता था, पर ये इंसिडेंट के बाद कम कर दिया। अरे इतनी जल्दी है हार मान गए यार तुम, हैं कि कोई बुरा ये ना बोल दे वो ना बोल दे। जाया करो भाई, जाया करो, जाओगे तभी अच्छा लगेगा, तभी लोगों से मिलोगे जुलोगे, लोग जानते हैं। मेरे भी 10-15 सब्सक्राइबर ऐसे ही बढ़े हैं। जाके ये मत बोलो कि हाँ मैं स्ट्रीमर हूँ, अगर आप उस स्ट्रीमर को जानते हो स्ट्रीमर खुद ही बोल देगा अरे भाई ये भाई भी स्ट्रीमर है। फिर 4-5 लोग चैट में पूछते हैं अरे यार आपका भी चैनल है, मैं भी सब्सक्राइब करके आता हूँ। मैंने क्लिप भी डाली थी, भेजूंगा आपको, ओके भेज देना। अगर हाइपरब्लूम करना हो उस टीम को क्या चेंज करना होगा? हाइपरब्लूम हैवी है, नॉर्मल और नॉर्मल ईआर वेपन। हाइपरब्लूम के लिए कुछ नहीं चाहिए होता, हाइपरब्लूम के लिए आपको ईएम चाहिए होता है, एलिमेंटल मास्टरी, वो भी आपके इलेक्ट्रो कैरेक्टर के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रो से हाइपरब्लूम ट्रिगर होता है, तो आपका जो इलेक्ट्रो कैरेक्टर है टीम हाइपरब्लूम टीम में उसको ईएम ज़्यादा चाहिए होता है। Was it because of Grandpa? Indeed, I fell in love. Though he was human, he had spent his entire life training on Mount Tianheng. When we met, it was not only my first foray into the world below, but his as well. Although clumsy and impulsive as he was, you'd think he was the real strange bird among the two of us. But still, just like me, he cared deeply about the world and wanted, more than anything, to cleanse it of all pain and suffering. मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि सोचेगा मैं व्यूअर स्टोरी कर लूँगा, जिसको सोचना है सोचेगा भाई, अब तुम क्या कर सकते हो। स्कूल की चीज़ें तो याद नहीं होती, लेकिन लोर पूरा याद है, गेम का पूरा याद नहीं है, I could not कुछ याद है। help but fall for him. But my time continued to tick away. Those 10 years passed by in a flash. Yet I did not want to leave his side, so I... Oh no. What happened next? She remained a human. I committed an offense.
I wanted to stay with him, even if it meant living a life full of pain and suffering, even if it meant that I would eventually turn into a monstrosity. Monstrosity? Why would you change into a monstrosity? पहले गेंशिन स्ट्रीमर्स के वॉचिंग कम आती है, मुझे ही ब्लेम करेंगे. अरे तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो भाई. तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो. लॉर्ड का तो पता नहीं, मुझे अबिस के एनिमी का रोटेशन मालूम है और एनिमी कहाँ स्पॉन होंगे वो भी पता है. भाई अबिस का प्रो है. अरीना मेरा अबिस कब हो रहा है दोबारा से अब, या कर दिया है? मैं क्लेम नहीं किया मैंने अब तक. तो ईएम राइडन को दूं, बाकी को नॉर्मल जो चाहिए, और ईएम वेपन भी लगाना पड़ेगा और ईआर वेपन से काम चल जाएगा. अगर तुम्हें देखो ईएम अच्छा खासा है तो तुम वेपन चाहे जो मर्जी लगाओ, ठीक है. अगर तुम राइडन ईएम बिल्ड कर रहे हो, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर ईएम बिल्ड कर रहे हो राइडन तो कर सकते हो, अगर हाइपर ब्लूम के लिए तुम्हारे पास कोई और इलेक्ट्रिक ड्राइवर नहीं है तो. वरना मैं ये कहूँगा कि तुम वो निकालो, क्या नाम है उसका यार बंदी का, अरे इत्तो की, यार मैं नाम भूल जाता हूँ यार. कौन है हाइपर ब्लूम टीम वाली यार बंदी? अभी बता देगा कोई ना कोई चैट के अंदर. वो पुल करना, कुकी शिनोबू. यस. I knew I had betrayed Master's hopes. और राइडन को वैसे बिल्ड करो जैसे बिल्ड होती है. Ashamed to face her. So I wrote her a long letter instead and asked someone to leave it outside her abode. I was convinced that she would not support my decision, and I lacked the courage to speak to her face to face. In my shame, I fled and tried to hide from the world. कुकी नहीं, फिशल है. फिशल से इतना कुछ खास नहीं होता. कुकी इज द बेस्ट हाइपर ब्लूम ड्राइवर. उसके बाद तुम राइडन कह सकते हो. But that was only the beginning of my troubles. I began to suffer. अच्छा मैंने आईडी पासवर्ड नहीं भेजा, चलो भेज देता हूँ. My memories became hazy and confused, भेज and देता I हूँ. could no longer keep myself awake. I understood that my pain was caused by my refusal to return to the life I was fated to lead. Along with my memories as a crane, I soon forgot the true cause of my suffering as well. I knew only that I had committed a sin. All I could do was pray for forgiveness, even if I had long forgotten what needed to be forgiven. Looking back, I was beyond lucky to have come across that traveling merchant at Wangshu Inn. It was such a fortunate coincidence that we were there at the same time. If it weren't for those soul-revitalizing tea pills, I probably would have... Granny, what's wrong? अरे गामिंग मिला या नहीं आपको? अभी तक तो नहीं मिला. सबसे बेस्ट ड्राइव वॉन्डर होंडा सिविक चलाता है. मैं तो राइडन को 1K तक ईएम देता हूँ. नाहिदा येलान शिंगचो अबिस ब्रेक. Coincidence? Why did I ever think it was a coincidence? Tea pills concocted using the blood of an adeptus? No, it couldn't be. ओह, क्लाउड रिटेनर ने भिजवाया. Master, don't tell me. Back then, that merchant was actually... ये मर्चेंट थी, मुझे लगा कर गई थी. I use Farina, Nahida, Raiden, Baijo for Hyperbloom team. Is this good or not? Yes, this is good. Human custom would dictate the conferral of gifts to be in order when one's progeny is wedded, would it not? Consider the pills a symbol of one's best wishes. गामिंग की एक लाइन बहुत सस है. कौन सी लाइन? मेरे पास तो है नहीं, तो मैं तो सुन नहीं सकता उसको. मुझे नोवेल 9 बार मिली 150 विश में. So when I tried to conceal my name and mistakes from the world and hide myself away in perpetuity, the only person I managed to deceive was myself. You knew where I was all along. One still remembers पूरी when गेम ही you were सस है. but a fledgling. You possessed a certain fondness for a particular game. You would hide yourself among a group of wild cranes and ask one to pick you out from among the flock. One found you with such ease every time. 'Tis a truth most evident. One always recognizes one's own, no matter what form they may take. ये इसकी बेटी है. Wait! Paimon's confused! आए?
Wait. Paimon's confused. I'm confused. So, Cloud Retainer, you found Yuendai again? But how? When? What happened after that? Perhaps it is now time for one to recount the rest of the tale. Okay, time for the cutscene. चला ले भाई, कहाँ अटक गया? अरे? Follow the memory to find the truth. Cool. One was furious upon receiving your letter. Seized with anger, one set out to bring you to your senses. मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला गेंशिन को छोड़ के GTA कर, आज नहीं तो लैपटॉप चुरा लूंगा, बाद वो खेलूंगा. कैसा है क्वेस्ट? अब थोड़ा अच्छा लग रहा है. ये हवा में क्यों नहीं उड़ रही है? हाँ. ये हवा में क्यों नहीं उड़ रही है? मेरा पिंग जियो में 357 आती है और ये कोई यहाँ जियो वाला नहीं भाई, मेरा तो इस टाइम वो वाला चल रहा है, एयरटेल का चल रहा है. 3 बार स्किल दबाओ. ये क्या माजरा है कि 3 बार स्किल दबानी पड़ेगी? ओह, उधर जाना है, समझ गया. वांगशू इन जाना है. In truth, one had more than a few misgivings about your chosen partner. As an exorcist, his talent was lacking. One could hardly say his skill with sigils was any better. But soon, one came to appreciate the devotion he bestowed upon you during your illness. He never uttered a complaint and rarely left your side. Unwilling to begrudge someone of such character, one decided to overlook his aforementioned deficiencies, glaring though they may have been. Wishing to grant you a life without regrets, one gathered many divine ingredients and used one's own blood to create a form of medicine. Though imperfect, it managed to suppress the more dire effects of your illness. As for how to deliver the medicine, after much contemplation, one eventually decided to perform the deed oneself. Oh, खुद आई मूछे लगाकर. One took great care to alter one's features and select the appropriate attire. Only after meticulous scrutiny did one finally set out for Wangshu Inn. As one expected, you were most ignorant of one's true identity. You showed not even the slightest inkling of recognition. One was quite torn. Should one have celebrated the success of one's disguise, or mourn the loss of your acquaintance? अरे मेरे घर पे भी फाइबर है, रेड में आता है पिंग. मेरा रेड में आता था जब मेरे पास BSNL फाइबर लगा हुआ था. जब से मैंने ये लगवाया अपना एयरटेल का, तब से ठीक है. Nevertheless, one would speak to you about another matter, if you are amenable, even considering your loss of memory. One was simply flabbergasted that you could so easily forget the consequences of consuming medicine infused with adeptal blood. Its proclivity to attract monsters is
hardly that complicated of a concept to remember. ओह तो उसकी दवाई के बाद इस पे मॉन्स्टर्स आते थे. While weak from sickness and heavy with child, had one not intervened to clear the fog, all of you would have been lost during the night. I lose my 50-50 at 84 PT. बहुत रेयरली होता है यार. एक बार हो गया दोबारा नहीं होगा. I'm pretty sure. नमस्ते फरहान, नमस्ते. कॉलेज से अभी आ गए हो? वेलकम बैक, वेलकम बैक. They were likely incited by the presence of godly remains. Said godly remains, in turn, were likely drawn to the trace of one scent on your body. One was, after all, an active participant in the Arkhon War. Some of the gods were likely shattered by contraptions of one's very making. In the end, one was relieved to see you endure through the night. At the break of dawn, one heard an infant's cry pierce through the air, and one saw you carefully cradle the child to your chest. I lose my 50-50 at 20 PT. Gaming चाहिए था, मिल गया. चलो, congratulations. One could not help but be moved by your joy. To see you happy, that was more than enough. Congratulations. Now you should have a complete understanding of the events. Wait, but if that's true, then the crane who took care of me when I was sick must also हमारी चैट मिस हो गई भाई. मैं 50-50 विन हुआ हूँ. एक मिनट को जरा. डायलॉग सुनो जरा. अच्छा, विन हुआ हूँ नाहिदा में. ओके, मैं भी 50-50 विन हुआ हूँ नाहिदा में. तो नेक्स्ट विशिंग काजुआ में करूँगा तो 50-50 लूज कंफर्म होगा. और उसके भी 50-50 चांसेस हैं विन और लूज के. नहीं, ऐसा कोई 50-50 लूज और विन करने का कुछ भी कंफर्म नहीं होता है. अगर आपको एक बार आपने 50-50 लूज किया तो अगला कैरेक्टर आपका गारंटीड होता है. लेकिन अगर अगला कैरेक्टर आपका गारंटीड है, आपको गारंटी में मिल गया, तो दैट डजंट मीन कि उसके बाद आप 50-50 लूज करोगे ही करोगे. हो सकता है उसके बाद आपको दोबारा मिल जाए. हो सकता है उसका आपको दोबारा मिल जाए. कई लोग 3-3, 4-4 बार चलते हैं, उनको 50-50 लूज नहीं होती. अभी ये कहाँ आ गया? आए? What is this place? माउंट एवसांग में ही है, किसी दूसरी रेल्म में. Just as you and I troubled one with her antics, so did you give one many a headache. Upon finding you burning with fever, one made plans to bring you back to one's abode for treatment. However, upon seeing one's form, you began to cry, refusing to get on one's back. 5 times लगातार 50-50 पिटी सिस्टम जीता. पिटी सिस्टम पता नहीं, लॉल काजो पर हारा जब पता चला कि 50-50 क्या है. वही कह रहा हूँ, कई बार तुम लगातार जीत सकते हो, कुछ नहीं पता चलता. बट मेरे अकाउंट में तो लड़ी लगी हुई है विन लूज की. यार ऐसा देखो कुछ नहीं होता. इट इज़ प्योर RNG. When one asked you why, apparently you believed that one could not possibly be a true Adeptus because all illuminated cranes are white from tip to toe. कैथरीन से डेलीज लेके जाना था. One had no choice but to apply powder to one's body to conceal the variegated nature of one's appearance. Powder? You became more than amenable enough when one stood before you devoid of any other coloring. वाह भाई, क्लाउड रिटेनर मेकअप करके गई. पफ देख रहे हो? It bears mentioning, however,
that as a crane, Yuandai was nearly entirely pure white in color. Though you had never encountered her in that form, you still recognize the essence of her being. Perhaps fate brought you two together in more ways than one. लेकिन मैं आज तक तो कभी 50-50 नहीं जीता. ये तो यार तुम्हारा अकाउंट प्रॉपरली देख के पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो कि नहीं. All has been revealed. और तुम्हारे अकाउंट को टाइम कितना हुआ है? हो सकता है कि अभी स्टार्ट किया हो तो तुम कहो कि पिछले 5-6 महीने में नहीं जीता. दैट्स अंडरस्टैंडेबल. लेकिन कोई अगर पुराना बंदा है जो 2-2.5 साल से खेल रहा है, वो बोले कि मैं आज तक 50-50 नहीं जीता, तो लगता नहीं. और दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि तुमने पुल कितना किया है. हो सकता है तुमने पुलिंग ज़्यादा ना की हो. One owes you an apology, Yuandai. One recognized you upon your very entrance into Wanmin restaurant. You and I lower moment. मतलब? One has always viewed you as a disciple of equal standing with Ganyu and Shenhe. Indeed, one wished to bring your story to a satisfactory end. 5-6 महीने हुए ना, अभी ज़्यादा पुराना नहीं है. Still, one could not reveal your identity right away. Had one simply informed you of all you had lost, all those cherished memories would merely have become the fictionalized account of another. Memories are most meaningful when recalled by those who lived through them. Would you not agree? Even if the process was painful and arduous to experience. Have you any further inquiries? Master, I must ask. If you found me all those years ago, why did you leave me be, even though you knew about my mistake? ये जापान और चाइना वाले एनिमल्स को ही इतना क्यूट बना देते हैं कि असली लड़कियों पे दिल ही नहीं आएगा. इट्स कॉल्ड बीइंग अ फरी. सर्च करना फरी क्या होते हैं. फरी FURRY. One has never regarded your action as a mistake. It was a simple choice, nothing more. वो कहने वाला था कि मैं रोऊंगा इस क्वेस्ट के अंदर. अब तक रोना तो नहीं आया मुझे. When it is time for one's progeny to leave the nest, it is the responsibility of an elder to let them fly free. Yet, when your wings grow weary and the night grows dark, just know that you always have a place to which to return. Child Hydro Arkhon, welcome to the stream. Hello. Tis What's a up? refuge referred to by many a name in mortal writing. Home, nest, haven. भाई की फेटिश फरी है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ. Its essence remains quite unchanged. He has a fetish and he doesn't even know about it. One speaks, of course, of a place not unlike one's own abode. One's disciples are free to come and go as they wish, yet the door remains forever open to those who wish to return. Thank you. Thank you so much. ऐसी मशीन बनाऊंगा, इधर से एनिमल डालो, उधर से वाइफू निकलेगी. खाना खा लेना. खाओ, तुम खाओ. अभी 15-20 मिनट लगेंगे. मुझे 15 मिनट लगेंगे कम से कम. ब्रो मेरे को 160 के एक पुल में ही क्लाउड रिटेनर मिल गई. क्या बात है. ये देखो, सीखिए इनसे कुछ सीखिए. अरे मेरी वाइफ है ना, अब दोपहर का लंच का टाइम हो गया ना, हम दोनों साथ में खाना खाते हैं. तो जब तक मैं स्ट्रीम से उठ नहीं जाता वो खाना नहीं खाती. वो साथ में खाना खाएगी. भाई आपने कोई डार्क एनीमे देखा है? हाँ मैंने वो देखा था, डेथ नोट. डेथ नोट काफ़ी डार्क है. चेनसॉ मैन भी डार्क ही है वैसे तो. किस तरह के डार्क की बात कर रहे हो? व्हाट सॉर्ट ऑफ डार्क? One expects you too have sensed the rapid deterioration of your condition as of late. अब डांस होगा यहाँ पे. ओह डांस नंबर. 40 years ago, you chose a path without a future. Though one used one's own blood to provide you with a few decades of extra time, it merely delayed the inevitable. One may have extended the path, yet one was unable to alter its final destination. मेरी फेटिश क्या है मुझे पता है. राइड एंड लव है हमारा. पर तुम तो कह रहे हो लड़कियाँ जानवरों वाली ज़्यादा पसंद आती हैं. जानवर वाले कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आते हैं. स्टोरी वाइज डार्क और एनिमेशन डार्क में फ़र्क है. तो जो अपना ये था क्या कहते हैं
डेथ नोट उसकी स्टोरी डार्क ही थी भाई. A Dance of Dragons. पहले पहले अच्छा मजे में चलता था, फिर लास्ट में डार्क बन जाता है. नहीं, ये तो स्टार्टिंग से डार्क रहा. डेथ नोट तो स्टार्टिंग से डार्क रहा था. Even the power of an adeptus has its limits. Had your condition continued to deteriorate, you would have forgotten your life as a human entirely. In the end, you would have turned into a creature lacking in the ability to even comprehend its own monstrousness. Another anime देखो. कौन सा anime देखूं ये तो बताओ. Fortunately, ये क्लिप होगा. करो क्लिप करो. क्लिप करो, भेजो मुझे. Claiming your memories. Though one sped the process along by providing some guidance, the result is entirely a reflection of your own effort. ओशिनोको वैसा है. ओशिनोको यार देखो, मेरा डिस्कॉर्ड मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाओ. वहाँ पे एनीमे डिस्कशन करके चैनल बनाओ. उस वहाँ पे जाके सजेस्ट कर दो. ऐसे बताओगे तो भूल जाऊंगा मैं दोबारा. मैं फिर ऐसे याद नहीं रहता मुझे. एनीमे नेम इज अनदर. अच्छा. ओह. What's gonna happen to Granny? One will help her reclaim her original form as a wild crane. If it be fated, she may recover her sentience one day. कितना प्यार है आप दोनों में, भगवान आपकी जोड़ी बना के रखे. यार हम खाना साथ में खाते हैं. ब्रेकफास्ट लंच डिनर हमारा साथ ही होता है. अभी उस दिन क्या हुआ मुझे बाद में पता लगा. मैं स्ट्रीम करता रह गया, पता नहीं क्या करता. पैलवर्ड खेल रहा था मैं. पैलवर्ड करते करते 5 घंटे हो गए. शाम के पता नहीं 4:30-5 बज गए. इसने खाना नहीं खाया. मैं उठा तो क्या मम्मी कह रही तू क्या करता रहता है, देखो उसने खाना भी नहीं खाया. मैं खा मैंने कहा तुम तो खा लेती, मैं अगर स्ट्रीम कर रहा हूँ तो मैं तो तुम तो खाना खाओ पीछे से. ये भाई ध्यान देना पड़ता है. She's gotta go back to being a regular crane, huh? Master, you've already done more than enough for me. I don't know how I could possibly repay your kindness. This is a better result than I could have ever hoped for. How much time do I have left? खाना फूड है या डांट खाई? अरे खाना भाई, खाना खाना. लविंग वाइफ सबको नहीं मिलती, ये तो है. That's true. Not long. The transformation is imminent. Not gonna lie, आजकल dark anime manipulation and similar things have become a cool thing for people. Concerning thing. यार टेस्ट है. इट्स नॉट लाइक ये कुछ आजकल का फिनोमिना है. ये कोई बहुत ये पुराना फिनोमिना है. लोगों को स्टार्टिंग से चीज़ पसंद आती थी. हाँ भी होता है कि स्टार्टिंग के अंदर एक टाइम था जब ये वाले एनिमे होते थे ना, ड्रैगन बॉल जैसे ज़्यादा चलते थे, जिसमें द मेन कैरेक्टर जस्ट कीप्स ऑन लेवलिंग अप. आजकल थोड़ा सा वो चलने लगा, थोड़ा डार्क डिप्रेसिंग टाइप का. एक तरफ मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं खाना खाऊं या ना खाऊं उसको मतलब ही नहीं है. Xianyun स्टोरी क्वेस्ट हाँ बस खत्म होने वाली है. वेलकम टू द स्ट्रीम टीम डायमंड. ये बच्ची रो रही है यार. Don't be sad, dear child. Granny has led a wonderful life. My only regret is having to leave you behind. आर्कन भाई मेरा क्रश सीनियर पर हो गया है. बस गए, होगी तुम्हारी पढ़ाई बेटा. होगी अब तुम्हारी पढ़ाई. Don't forget to eat well, okay? A growing young lady like yourself needs lots of good food to grow big and strong. Promise Granny you'll take good care of yourself when I'm gone. एक तो उसके माँ बाप नहीं है, इकलौती दादी बची थी, बच्ची को अनाथ करके जा रही है. वाह. Promise, Granny. I'll do whatever you say. अरे टेस्ट like even I like stories but then people who are new to these things get into them and don't take it as a story. सब डिप्रेस्ड हैं आजकल. सही बात है. Good girl. Good. Depression is in fashion. Don't worry. It's not goodbye forever. Granny's gonna become the most formidable crane in all of Mount Outsung. Granny will train day and night. कौन मुझे बताएगा डिप्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? बिना गूगल किए. I won't stop until I can turn into a human without having to rely on anything but my own power. When that day comes, ब्रो ये क्वेस्ट मत करो, मैं इमोशनल हो गया. you and I. How's that sound? मुझे अब तक ऐसा कोई इमोशनल मोमेंट नहीं लगा इसके अंदर. खत्म होने को आई क्वेस्ट ये, और लोग कह रहे थे काफ़ी इमोशनल क्वेस्ट है. अब तक तो मुझे कोई ऐसा लगा नहीं. बाकी देखते हैं, अभी खत्म हो रही है.
ये होइवर्स वाले अब सभी स्टोरी सैड बना रहे हैं। धीरे धीरे होइवर्स की इस कहानी ने बड़ा डार्क एंड ट्विस्टेड सैड टर्न ले लिया है, क्या बोले। मेरी पढ़ाई सीनियर से बेटर है, मेरी नॉलेज सेम है, बट वो बस क्लास में सीनियर है दैट आई कैन ईजिली सरपास हर। भाई निराशा दुख पैदा होगा, डिप्रेशन है। खिन्नाटा मतलब? मैंने पूछा डिप्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। That's a good girl. Even though we won't see each other for a little while, as long as we both work hard, we're sure to meet again someday. I'll eat well, Granny. I promise. And I'll wait for you, no matter how long it takes. I'll wait for you to come back. खिन्नाता आता नहीं मतलब? That's a good girl. Then Granny really has no more regrets. अच्छा ऐसा है क्या कि अगर क्रेन में कन्वर्ट नहीं हुई तो ये कुछ पागल वागल हो जाएगी, मर जाएगी? मेरी दादी भी नहीं है मेरे साथ, इसलिए मैं रिलेट कर सकता हूँ इस क्वेस्ट से। लव यू दादी जी। ओ I'm so sorry, Master. Thank you for everything. सेल्फ हैप्पीनेस मतलब? लोग कुछ कुछ बोलते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब कोई नहीं दे रहा। बिना गूगल के बताओ डिप्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। गेस तो मारो। बताओ, दादी चिड़िया बन के उड़ गई। हाँ मैंने कहा तो सही, खिन्नाटा नहीं। मैं वर्ड पहली बार सुन रहा हूँ ये। The longer you live, the more you realize the only pain and suffering exists in this reality. बताया तो डिप्रेशन को हिंदी में दुख, निराशा, पीड़ा, मानसिक तनाव नहीं। दुख कहते हैं, क्या कहते हैं, सौरो को। निराशा कहते हैं होपलेसनेस को। पीड़ा कहते हैं पेन को। मानसिक तनाव कहते हैं मेंटल स्ट्रेस को। डिप्रेशन को क्या कहते हैं? Let her be. At her age, crying is a natural, if not fitting, response to such an event. Tears are a necessary part of maturation. Sometimes there is scarcely a better vehicle to wash away the toll of stress and misery. अरे आता नहीं चिन्हा। अरे मैं बता देता हूँ, तुम्हें से किसी को नहीं पता। डिप्रेशन को हिंदी में कहते हैं अवसाद। अवसाद। Now that the issue has been resolved, you should also take a moment to relax. Give yourself some time to rest. Take a nap if you must. One will wake you in due time. इंग्लिश चैनल वाला ओपन कर दिया, मुझे लगा नहीं। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, पता है तुम्हें? आई टीच इंग्लिश। अवसाद फर्स्ट टाइम सुना? गूगल करो जाके, अवसाद इन इंग्लिश। अब कोई कट सीन है क्या? ये तो सो गई। खुद सो के सो गई, खुद सो गई। तू भी सो जा। ये बात, पाइमन की टांगे टूट गई। पाइमन की टांगे ऐसी हैं। अरे दादी आ गई, बड़ी जल्दी आ गई है तो। मैं जरा सीन एंजॉय कर रहा हूँ, चैट अभी पढ़ता हूँ थोड़ी देर में। ओह I always believed we would see each other again. ओ भाई That our days साहब, of separation would finally end. And all my troubles would be behind me.
That's nice. If only things could stay this way forever. A nightmare? Curious. If you're relaxed, shouldn't your dreams be pleasant? It was a good dream. It's just... Hey, You bola. weren't ready to wake up. Hey, bola. Snow White. Eloquent as one may be, words of comfort are not one's strong suit. You are doing all you can. One can see your strength of will, your fearlessness in the face of danger. And so, whatever your dream may be, one believes that you shall achieve it. Of course, whenever the perils you face overwhelm you, or you become weary, one is always here for you. After all, as an elder, it is only right to look out for the young ones. Grilled chicken drumstick. वाह जी वाह. हाँ जी, अब चैट पढ़ते रहो. ड्रीम है शायद. हाँ, ऑफ कोर्स ड्रीम है ब्रो. लाइफ में कभी अभी हार मत मानो. पेन और डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा. अगर आपने अब लाइफ से हार गए तो आपकी हिम्मत भी ख़त्म हो जाएगी. हाँ, बात तो सही कह रहे हो, लेकिन यार बस जो लोग हार जाते हैं ना वो हार ही जाते हैं. भाई इस बच्ची और मेरे में क्या डिफरेंस है? आई डोंट नो. मैं फॉर्म पे मम्मी पापा का नंबर लिख सकता हूँ. कोई बोला दादी टेस्ट ड्राइव पे गई थी. पाइमॉन इज द मोस्ट सस कैरेक्टर एवर. वेक अप टू रियलिटी एथर इट्स गेंजुत्सु. ब्रो जब मेरी लाइफ से कोई बहुत दूर हो जाता है तो मैं रोता नहीं हूँ, हंस के बाय करता हूँ अपने पेन को भूल के. कोई नहीं भाई, भी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ये सब चलता रहेगा. भाई ट्रैवलर ने बात की, वैसे तो पाइमॉन उसकी सारी लाइंस चुरा लेती है. सही बात है. पाइमॉन सो गए ना यहाँ पे. ये बताओ पाइमॉन को क्या ड्रीम आ रहा है? ग्रिल्ड चिकन ड्रम स्टिक्स नॉम नॉम नॉम. ये पाइमॉन का ड्रीम है. Was Paimon sleeping just now? Oh. Oh, Paimon wasn't talking to you. Paimon had a dream about eating grilled chicken drumsticks, that's all. Madam Adeptus? Oh, Xianyun, you're awake. How do you feel? I feel a little better. Thanks. I know I'll see Granny again someday, so I don't feel so sad anymore. Madam Adeptus, could I ask you something? Would you take me in as a disciple? Oh, and have you reasons for this sudden interest? I know Granny thought what she did back then was wrong. She felt really bad about it. पाइमॉन की जिसने स्टोरी देखी है उसको रोना आया है. पाइमॉन की स्टोरी? पाइमॉन की कौन सी स्टोरी है? अगर कोई हिम्मत हार रहा है एंड सुसाइड की तरफ जाना चाह रहा है तो सोचो कि यू आर नॉट श्योर ऑफ आफ्टर लाइफ. जस्ट कीप हेवन एंड हेल असाइड. व्हाट इज आफ्टर डेथ? यू आर ट्रैप्ड इमोबाइल. यार पता है उस टाइम कोई इतना सोचता नहीं है. मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ. पीपल डोंट रियली केयर. पीपल जस्ट वॉन्ट राइट नाउ टू एंड. ठीक है. और मैं ये बात कह रहा हूँ एज समवन हु हैड अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड, बहुत ही क्लोज फ्रेंड कमिट सुसाइड. ठीक है. आई लिटरली सॉ हिज बॉडी कम ऑफ सीलिंग जब मैं उसके घर पहुंचा था. ठीक है. सो आई हैव गॉन थ्रू दिस फर्स्ट हैंड. ट्रस्ट मी. उस टाइम यू नेवर नो किसके दिमाग में क्या चलता है. Without that mistake, I would have never been born. Even though Granny lost her memories, she never forgot to show me how much she loved me. So, I thought maybe one day... In a white space where only your mind works but you cannot move, all is stiff.
एक फैक्ट है, पाइमॉन तो अननोन गॉड है भाई, ये बहुत पुरानी थ्योरी है. I could become a cool adeptus like you and help a whole bunch of people, just like Granny wanted to do. Upon some reflection, one supposes you are no mere mortal. The fact that Yuendai's blood flows through your veins is proof enough of that. आओ TTG Games, welcome back. Thank you so much, Madam Adeptus. No, I mean... सिड का DC देखा क्या? नहीं भाई, नहीं देखा मैंने. अब क्या हो गया वहाँ पे? Oh. Oh, that's sad यार. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बंदे को स्ट्रीम पे भी सिड लेकर आया था कभी. सिड का कजन पास्ट हुए, हाँ भी देखा मैंने. आई फील लाइक कि वी हैव सीन हिम ऑन स्ट्रीम. स्ट्रीम के सिड के स्ट्रीम पे आता था ना वो. दैट्स सैड यार. मैं पर्सनली डीएम करूंगा सिड को भी. About this. Paimon's gonna let you in on a little secret. We've seen Cloud Retainer's 2 other disciples, and they pretty much eat nothing but bitter herbs like chin-chin and violet grass. It's not that we can read everything in their mind about what they are thinking. हाँ ये तो है. 3 years, 24 hours in pain, and my best friend now becomes the worst enemy, and I am laughing at corner. तुम तो भाई अलग ही लेवल की बात कर रहे हो. फैक्ट मैं जो बताया है, पाइमॉन भी नाहिदा की तरह अपने आप को छोटा रखते हैं और पाइमॉन खुद पावर्स भूल गई है. यू नेवर नो. स्ट्रीम के बाद मैं मैसेज करूंगा सेट को. How utterly preposterous. One has never enforced such a rule. Every individual must find their own path to enlightenment. So long as one retains a pureness of spirit, one's dietary proclivities are quite irrelevant. Well, you say that, but Paimon's not seeing any tasty treats up here now, is she? Although Mount Outsong is rich in natural beauty, its location does preclude access to certain finer mortal comforts. That is precisely why one plans to relocate to Liyue Harbor. Shu Yu shall have the honor of becoming one's first disciple in the human world. Whoa! You're leaving Mount Outsong? One has never concerned oneself with the location of one's residence. From the very beginning, one has sought only solace and peace. Yet in the end, all of one's disciples ended up in Liyue Harbor. Ganyu, Shenhe, Yuendai, they all chose a life among the mortal world. One has reflected on this fact for many years now. One can only assume that it is due to some failing on one's part as an elder or master. A failing, perhaps, of recognizing what it was they truly wanted. One is most curious as to what aspect of Liyue Harbor could have enticed them to remain there. One could hardly offer an opinion on the matter, but perhaps some time in the harbor will prove instructive. Missing married streamer is still live. हाँ बस अब ये स्टोरी को फिनिश करके मैं जा रहा हूँ यार. हमारी बीवी ने खाना नहीं खाया अब तक, वो मेरा वेट कर रही है लंच के लिए. Why are you all so silent? Paimon is just a bit shocked, that's all. So, does this mean we can grab a meal together in Liyue Harbor sometime? Thank you, Team Diamond. Thank you for coming on the stream. Really appreciate it. Take care, bye.
दोबारा करेंगे स्ट्रीम तब आना फिर से. One has precious little time to squander. However, if one finds oneself otherwise unoccupied, one would not be opposed to the idea. One will be assuming the identity of a human while residing in Liyue Harbor. You should take care to avoid disclosing one's true identity. Don't worry, we'll help you keep it a secret. So, when can we expect to start seeing you in the city? Perhaps in 2 days' time. One has some matters to see to before one's departure. Preparation is the key to success, after all. One plans to put up various items from one's ओ जी collection. हंस भाई क्या हालचाल. वेलकम टू द स्ट्रीम. बड़ी लेट हो गया आने में. One has already picked out a handsome property near Chuhu Rock. 'Tis no small purchase, but what is mortal life if not one expense after another? बाकी लेट हो गया आने में. ये क्वेस्ट करके मैं स्ट्रीम बंद कर रहा हूँ. Seems like you've really thought of everything. ओ जी स्पाइडी वेलकम टू स्ट्रीम. तुम भी लेट हो गए. वेलकम. कोई बात नहीं. मैंने 70 खेलना चालू कर दिया है आजकल. बाकी सब बहुत कम खेलता हूँ. 70 क्या है? व्हाट इज SOTTR? How about we meet up in Liyue Harbor in 2 days? A sensible plan. See you then. Oh, also, why don't you take this suspensus somnium mechanism as a souvenir? Anytime you should feel ill at ease in the future, you may try quieting your mind and sitting in meditation as you listen to its melodies. I've taken a specific liking to Maya, Aztec tribes and all. Shadow of the Tomb Raider. अरे Shadow of the Tomb Raider. Oh, okay, समझ गया. Shadow of the Tomb Raider. Thanks, Cloud Retainer! Hey, didn't we promise Shincho that we'd tell him what we found out? Should we make a trip to the Feiyun Commerce Guild? It's totally up to you. So, about your move to Liyue Harbor, you gonna tell the other Adepti about it? I have left an explanatory note in my abode. Those 2 old fossils will discover it, I am sure, should they come seeking my company. Considering their recent penchant for going off on private escapades, however, I find myself caring little for how they shall receive this news. मैं खेलूंगा. मैंने पहली वाली तो खेली है. स्ट्रीम पे खेली थी बहुत टाइम पहले. तुम्हें याद होगा. बाकी की 2 गेम्स मैंने खेली नहीं. खेलूंगा. You remember Titan? I am from his stream. I usually watch live at night and he is the only one online at the time. अच्छा Titan TTF. समझ गया. By the way, Shuyu, we have a friend who helped us learn a lot of information about your granny. Is it okay if we tell him the full story? Sure, I don't think Granny would mind. As long as you don't tell a whole bunch of people. I don't think she'd want too many people to know. They might go to Mount Outsong and start bugging her about it. Granny needs to focus on her training, you know? But telling a friend or 2 is probably fine. अच्छा तभी ऑनलाइन थे. चलो कोई नहीं. अब जब भी स्ट्रीम करूंगा जस्ट चेक आउट माई चैनल. अगर कभी मैं ऑनलाइन हो तो जरूर आना फिर से यार. अच्छा लगेगा. No worries, our friend can keep a secret. Okay. Wait until 2 days later. अबे यार. Please keep happening to online this time, bro. Please keep happening to online this time, bro. समझा नहीं मैं. तुम्हारी इंग्लिश को क्या हो गया? लास्ट वीक दो की गेम फ्रीक था स्ट्रीम पर. भाई इतने में खेल ही नहीं सकता गेम्स. इतनी सारी गेम्स खेलने का ना वो नहीं बचा. टाइम नहीं बचा. उसकी ही इंग्लिश कंटिन्यू की मैंने. मुझे कुछ समझ नहीं आया तुमने क्या बोला अभी. Your concerns are excessive and unfounded. This is but a simple collection of ordinary valuables. Such intense scrutiny is hardly necessary. To be quite honest, your insistence on that fact is my primary cause for concern. अभी सर सीधा IRL गेम खेलेंगे. घर घर बिजनेस IRL वर्जन. अच्छा घर घर तो मैं डेली खेल रहा हूँ. Every single item here could be worth more than everything I own combined. I simply can't risk shelling out that kind of mora without proper scrutiny.
If I'm wrong, I would never be able to earn it back, not even if I worked every single day for the rest of my life. मेरी फुरीना देख लो एक बार भाई, अभी स्टोरी क्वेस्ट चल रही है एंड माय वाइफ इज वेटिंग. बस 1 मिनट दो, पहले खत्म करने दो. I have to be careful. Yes, you can never be too careful. We're here, Clow. Miss Xianyun, what are you guys arguing about? स्ट्रीमर गेटिंग सस. नहीं यार, खाना खाने के लिए बैठी हो. Perfect timing. This ignoramus is questioning the authenticity of my wares. I'll have you know, these items have remained untouched in my personal collection for several hundred years. To question their legitimacy is pure folly. Several hundred years? Indeed. They're family heirlooms, you see. Passed down over many generations, as families are wont to do. इंग्लिश कच्ची और थोड़ी समझ आती है, पर मुझे समझ में नहीं आया तुमने क्या लिखा, इसलिए मैंने पूछा ना. Yep, they've definitely been around a while. We can vouch for her on that one. Hear that? Had I not found myself in need of Mora, I would scarcely have had the heart to part with them. Indeed, you should consider it an honor to even have the opportunity to behold them with your own eyes. भूख लगी उनको, भूख लगी हुई है भाई, भूख लगी हुई है उसको. Doubt their authenticity any further, and I may just decide to take them to another buyer. नहीं, मैं खिलाऊंगा नहीं, हम साथ में खाते हैं खाना. मैं उसको बोल भी दूंगा ना कि तुम खा लो, वो नहीं खाएगी. For any insult, miss. You see, I know full well that I lack the knowledge to judge the true worth of these items. If you could wait but a moment, I've hired an expert to appraise them for me. He should be here shortly. Hired an expert to appraise them. अब वो एक्सपर्ट कौन है हम सबको पता है. मैंने क्वेस्ट नहीं किया, फिर मुझे पता है एक्सपर्ट कौन है. ऊपर की चैट बोर्ड समझ आ जाएगा. आई थिंक इज ट्राइंग टू से ट्राई टू कम अगेन दिस टाइम. अच्छा, ऐसा बोल रहा है. मेरा घर वाला सीन भी सेम है, वही. An expert, you say? Very well. I will wait for a little while longer then. Traveler, Paimon, this is my new residence. If you have cause to seek my company in the future, this is where you can find me. और एक्सपर्ट आ गया. Oh, it's you two again. Hello. ओ, ड्रेस चेंज हो गई इसकी. नाइस. You got a new outfit. It looks great on you. Mm-hmm. Master made it for me. I like it too. Huh? You know how to make clothes? Do I know how to make clothes? With the support of the proper तो mechanism. इस बात पर मुझे बटर चिकन खिला दो फिर. तुम एक वेजिटेरियन इंसान से कह रही हो बटर चिकन की पार्टी देने के लिए, हैं? I brought in most of my stuff. There's a few boxes left, but they're kind of heavy, so I just left them outside. मैं तो डॉक्टर रेशियो के लिए HSR डाउनलोड किया और मिल गया. Fret not. I मिल ही shall गया help होगा. you move them into your room. Actually, I should probably sort through my stuff a bit first. Everything's kind of messy right now, so maybe you could not look yet, Master. ब्लैक स्वान भी गई या मिल गई? Are you vegetarian? Yes, I'm a vegetarian. It appears my young apprentice has her own fair बटर share पनीर of खिला दो फिर. secrets. No matter. Do what you must, child. Now, this expert you mentioned. When can we expect their arrival? Soon. Ah, there he is. कौन गैस मारेगा कौन है एक्सपर्ट? एक ही तो एक्सपर्ट है यार लीवे के अंदर. Here, allow me to make some introductions. This is Mr. Zhongli, a well-respected consultant at Wangshang Funeral Parlor and an expert in all manner of valuables and antiques. और तुम सबका पप्पा. Literally, he is the prime adeptus. सारे adeptus का बाप है ये. Mr. Zhongli, this is Miss Xianyun. She's the one who's looking to sell the collection of valuables I mentioned earlier. Very well, good. Huh. If it isn't Miss Xianyun. It has been quite some time since our last meeting. What a serendipitous reunion. Serendipitous indeed. मेरे तो HSR में टाइम पास हो रहा है. This Miss Xianyun. Indeed, most serendipitous. Tone down होगी उसके. Well, as of late, Mr. Zhongli. Tone down होगी भाई. बॉस सामने आ जाते हैं ना, लोगों की टोन डाउन हो जाती है. Quite well, thank you. Quite well, thank I you. was fortunate enough over the past few days to enjoy both a stroll in the mountains and a fresh brew of tea from the most recent harvest. The experiences left me with such insight and peace. Now it will be an awkward moment between these two.
Huh. So you two are already acquainted? Mm-hmm. Indeed. How fortunate we are that fate has brought us together again. If you are otherwise unaware, allow me to inform you that Miss Xianyun is a well-regarded collector and appraiser. She is well-versed in all fields, and oft-celebrated for her impeccable taste. You stand to Off-stream gain वाली आवाज much on-stream from this निकाल रहे हो. opportunity. You are too kind, Mr. Zhongli. True collectors pride themselves on their wealth of knowledge and eye for detail. I can say without a doubt that you are foremost in that regard. Why, you flatter me, Miss Xianyun. It would seem that you are as self-effacing as ever. ओह, अभी मैंने रियलाइज किया पिछले 3 साल से गेम चल रही है, किसी भी क्वेस्ट में जोंगली अभी किसी शाओ को छोड़ के किसी और एडेप्टस से नहीं मिला है. नहीं, उससे मिला है, स्ट्रीटवर्ड रैम्बलर से मिला है, मैडम पिंग से मिला है, क्लाउड रिटेनर से नहीं मिला अब तक, और फेस टू फेस नहीं मिला. इवन लीवे की स्टोरी क्वेस्ट में भी जोंगली सामने नहीं था कहीं पे, इन एडेप्टस के सामने. एडेप्टस अकेले लड़ रहे थे. Not at all, Mr. Zhongli. Not at all. While I am loath to butt into this conversation, I must ask, you two already knew each other, and you seem to have quite a cordial relationship. Can I be certain that you're not working together to swindle me? I mean, you never know. A preposterous accusation. The heavens themselves would collapse before we would conspire to do such a thing. ये दोनों मस्त मस्का मार रहे हैं. Miss Xianyun speaks the truth. Contracts are built on honesty and trust. If that proves to be beyond your capabilities in this instance, this transaction may be taken elsewhere. Say no more. Let us depart. I jest. What fool would still harbor doubts after Mr. Zhongli himself has vouched for the goods? Miss Xianyun, wait! I'm waiting for Zhongli to pull his noses telling that the ones Fatui had was fake and become dragon daddy. नहीं, वो नहीं होने वाला भाई. अभी क्या पुल करोगे next? Newlet. I deeply apologize for doubting you. So, Mr. Zhongli, could you please give me a final verdict on the value of these items? There is no cause for concern. They are indeed rare and precious valuables. Take this mechanism, for instance. Though one may not immediately perceive its purpose, its structure and appearance are अभी recently lore देखा क्या? नहीं. Visions are indeed given out by Archons. हाँ, ये तो मुझे पता है. The same can be said for this one here. Few could hope to possess an item that so perfectly blends mechanical wonder with geometric grace. I am sure you have heard from your travels that the study of mechanisms is among the most wondrous arts in this world. With that in mind, I earnestly recommend procuring every last item in this collection. All right. Since I hired you as my consultant, Mr. Zhongli, I shall, of course, trust your good opinion. Then, in that case, Miss Xianyun, I'll take the lot. However, since the final sum is quite large, how about we start with an initial deposit through the Northland Bank? The Northland Bank? Huh. Oh, you refer to the fiduciary house. Oh, very well. एक दिन की छुट्टी मिली तो लॉकडाउन जैसा फील हो रहा है. I fear people only use the term bank nowadays. In that case, I'll be off for now. I'll return to collect the goods once you've received the funds. My friends, have you been doing well? इस पॉइंट के ऊपर हर कोई जोंगली का दोस्त है. Everyone is Zhongli's friend. We've been great. How about you? Paimon didn't know you were such a busy consultant. My days have been quite pleasant as well. I had been quietly enjoying a cup of tea when Mr. Xiaozu requested my services. As for you, Miss Xianyun, I presume you must be looking to settle in the city? I must say, the name Xianyun sounds exceedingly strange coming from you. Perhaps you Man could with zero dispense haters that visualized. particular epithet in further conversation. Whatever for. Am I not addressing you as a friend should? Well, that is true, but
वुदरिंग वेव्स का सीबीटी मिला क्या भाई? हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को नहीं मिलता. Alas, refer to me however you will. After all, a name exists such that... It would seem that you have gained many valuable insights over the years, Cloud Retainer. One has indeed. One's previous stays were all brief. Now that one has made up one's mind to move and settle, one has gained a much better appreciation of the hubbub and commotion of the city, as well as the people's hard work and ardor. ट्राई करने में क्या जाता है? मैंने किया था, मैंने अप्लाई किया था, नहीं मिला. This city is much changed from how it was more than 1,000 years ago. Not unlike the ocean tides, so too shall the movement of people ebb and flow. From turmoil to peace, enlightenment to aspiration. Human society possesses limitless potential. In another 1,000 years, the scene we witness here may change in ways that are impossible for either of us to imagine. Alright, that's enough reflection for one day. No need to get all sentimental on us. You make a valid point, Paimon. Now that the sale has concluded, what say one plays the host as we try some specialty dishes together? One must profess great interest in trying bamboo shoot soup. Perhaps you have forgotten, Cloud Retainer, but I once tried my hand at that dish. You were at the table on that occasion, so logic dictates that you should have already tried it. Oh? What occasion was this? It was a reunion between friends several centuries ago. Alas, you must have been too preoccupied to secure yourself a portion. Or perhaps our other companions simply availed themselves of faster reflexes. एनिमे देखते हो क्या? हाँ भाई, इस टाइम मेरे 4 एनिमे एक साथ देख रहा हूँ मैं. Hardly. 'Twas most certainly out of consideration for the others in attendance. In but a moment, one will show you what it means to have a true deftness of hand. It is settled then. Bamboo shoot soup, mora meat, crab roe tofu, triple layered consommé. We shall enjoy the lot. फाइनल्स का क्या हुआ बंद? यार नहीं, इतनी गेम्स नहीं खेल सकता है. टाइम एक कैपेसिटी होती है ना इंसान की, उतनी नहीं खेली जाती. It is prime time for them to meet one's newest disciple. Is that agreeable to everyone? It should be a most splendid occasion. Xianyun, come now, it is time to dine. Ah, this gentleman over here is Mr. Zhang Li. He is, A humble employee of Wangsheng Funeral Parlor. Pleased to make your acquaintance. Nice to meet you too, Mr. Zhengli. That should be everyone, right? Let's go! Sounds good. Actually, Master, have you ever tried Adeptus' temptation? I heard it's impossible to stop eating after even just one bite. You know, 'cause it's super tempting and stuff. Is that true? That sounds One must be solo leveling. हाँ वो तो चल रहा है. अभी इसका लास्ट एपिसोड देखा मैंने. preparation, certain dishes can be too delicious to resist. Huh? Why are you all walking so fast? Hey, wait for Paimon! मैंने सोलो लेवलिंग सीजन 1 खत्म कर दिया. कहाँ खत्म कर दिया? अभी तो एपिसोड ही आया, लास्ट एपिसोड तो आया उसका. सीजन 1 तो अभी लाइव चल रहा है सोलो लेवलिंग का. खत्म कैसे कर दिया तुमने? तुम फ्यूचर में देख रहे हो? चलो भाई, इससे पहले मुझे इस बार वाकई में डांट पड़ जाए. आई एम लीविंग. क्योंकि अब तो मेरी मम्मी भी आ गई है कमरे में एक बार मुझे देखने के लिए. ऐसे खाना खाते नहीं तो माइक है ना मुंह में घुसा दूंगी और पीछे से निकाल दूंगी तार के साथ. मानवा की बात कर रहा. अच्छा पढ़ लिया तो सीजन 1 क्यों बोल रहा है? मानवा में सीजन कौन से होते हैं? रेजिन कैप्ट. हाँ भाई. भाई सर क्राई आ गया क्वेस्ट देखकर. आ गया क्राई? मुझे नहीं आया. चलो गाइज भाई, जिसका क्या कहते हैं कैरेक्टर रिव्यू अकाउंट रिव्यू रह गया ना वो अगली बार करा लेना. अभी मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है? प्लीज़ नेक्स्ट टाइम करा लेना. आई हैव टू गो नाउ. चलो चलो पैकअप 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 गाइज पैकअप. ठीक है चलो मिलते हैं तुम सबसे बाद में. टेक केयर, बाय. कल करते हैं.
can never take